Hi everyone, welcome to my space. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर. I'm just waiting for a few more people. और इस हफ्ते के जो बेस्ट ड्रामे हैं, the best shows that we've seen, so उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. I'm just waiting for more people to join in. My co-hosts and obviously some of the very fanatic drama fans. और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वो हमें ज्वाइन करेंगे. तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी स्पीकर पे लें. कास्ट है जो बिछड़ गए की, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें जॉइन कर सकें. I'm just waiting for a few more people and then we'll start. In the meantime, uh, the top dramas that we've been watching and that we've been talking about are obviously Jo Bichar Gaye. थोड़ा सा introduction दे रही हूँ. Waiting for more people to join. Jo Bichar Gaye is based on the fall of Dhaka. Sangema, which is based on the practice of ghag, which is where a man goes and fires outside a woman's house, and thereby declaring that she's his forever. So it's kind of like an honor-related practice. And then we have a dobara, which is also discussing a topic which is quite difficult, which is कि हमारे यहाँ जब बड़ी उम्र की कोई औरत अगर किसी अपने से कम उम्र के मर्द से शादी करती है तो उसको कैसा मतलब उसको सोसाइटी कैसे परसीव करती है. Then Sadaf Heather is here, so she's going to be my co-host. So अगर मैं कहीं बीच में आगे पीछे चली जाऊँ तो सदफ मौजूद हैं. सालसबील हैं, she's also a very good we have a lot of conversations with her about Pakistani dramas. Afia blogs जो हैं उनके नाम से वो मौजूद हैं. Sadaf is now there. Alia Waheed bhi hai. I think that's yes. And then she's also been with us. She's discussed Pakistani dramas with us before. तो Sadaf भी आ गई हैं. तो just quickly doing a few more dramas जो हम बात कर रहे हैं. दोबारा है, ए मुश्ते खाक है. There are a lot of great shows which discuss social issues and a lot of other psychological, nuances in a person's life and personality. So welcome Sadaf and Rana is here. Yay Rana. So Rana Majid Khan is here. So before I give Rana the mic, Sadaf, Assalamu alaikum. Welcome to the space. Welcome everyone. Sadaf is going to be my co-host guys. और अगर आपने सदफ का नहीं पढ़ा हो तो मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करा दूं कि सदफ डॉन इमेजेस के लिए लिखती हैं और बहुत अरसे से पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर लिख रही हैं. शी इज़ अ वेरी वैल्यूबल एंड अ क्रेडिबल वॉइस. Rana is here, so I'm just waiting for Rana to accept the mic. And Sadaf, assalamu alaikum. Walaikum assalam, Mahwash. Sorry, I'm a little bit late, guys. Nice to see such a nice crowd. A lot of people here, and excited to see Rana because I loved him in Jo Bichar Gaye. Yeah, so I've asked for a lot of people spaces is very new. It's not something जो हम जैसे लोग हैं जो कि मुसलसल ट्विटर पे जिंदा रहते हैं, हमारे लिए तो spaces थोड़ी पुरानी हो गई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए spaces अभी नहीं है. So we're just hoping कि there are no glitches. So Rana, if you could accept the speaker option, accept the request to speak, you will come as a speaker and we'll get you on board. And because we want to start with Jo Bichar Gaye, Sadaf, so until we get Rana as a speaker, I think everyone needs to know that this is a drama you should not be missing out, right, Sadaf? Yeah, I think it's probably the best. I wanted to say one of the best, like, and I think I'm being a little bit generous because there are bits and pieces in some of our other good dramas that I think they need fixing, and I think Jo Bichar Gaye is about as perfect as it gets. I'm a big fan of Haitham, the director. And I know that Mahwash, आप तो constantly you're praising it, but there's a reason. हम लोग इतनी तारीफें एक ड्रामे की आई डोंट थिंक कंसिस्टेंटली करते हैं. व्हाट डू यू से माविश? आई डोंट थिंक वी डू दैट कंसिस्टेंटली. नहीं, ऑब्वियसली सदफ, क्योंकि कोई ना कोई ड्रामा कहीं ना किसी पॉइंट पे आके हमें डिसअपॉइंट कर देता है और हम अपने बाल खींचना शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्यों दिखा दिया. बट जो बिछड़ गए एक कंसिस्टेंटली फ्लॉलेस प्रोडक्ट है. और जो बिछड़ गए एक ऐसा स्टोरी है, एक ऐसी चीज है जो कि अगर उन्होंने जरा सा भी अगर वो अपनी लाइन से इधर उधर हुए होते या उन्होंने कोई गड़बड़ की होती तो लाजमी मैं और आप जैसे लोग तो हम कहते कि यार ये क्या है, व्हाई इज दिस देयर, एंड इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें फलां प्रॉब्लम है. लेकिन इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को इतना आर्टिस्टिकली साउंड तरीके से दिखाना, आई मीन हैट्स ऑफ टू हाइसम एंड द एंटायर टीम.
Yeah, it's beautifully done. I think last week and the week before, it was so good that I felt कि I should do a week long appreciation of it. लेकिन आखिर में मैं भी थक गई. मैं सोचती हूँ कि मेरे जो readers हैं, they will be exhausted too. But it's something, if you just think about it, the main thing I find is that budget itni kam. It didn't get to shoot in Bangladesh or any of the locations, and yet this looks better, not just equal but better than a lot of Netflix thrillers I've seen. I watch a lot of Netflix, obviously, because I talk about dramas, and I'm sure you guys do too. अगर आप सिर्फ देखें वो say something like 50 S squared, I think the name was, that was a Turkish drama, and they shot it in a mahalla in Istanbul, and then you compare it to what you have in Jo Bichar Gaye, it looks like you're in Bangladesh. It looks like this is Dhanmandi. It looks like this might be Dhaka University. And then each of our characters, I mean, each one of them, the details. I mean, आप खुद ही बताएं. I point out that I don't know who it was, that the other dramas that we are are a little bit, the directors haven't taken care of detail. And you can see in, say, what is that drama, Sangema, which I'm a huge fan. And Atif अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन does a man living in a graveyard have that much gel in his hair consistently? These are the kind of things that directors take care of, and yet you see in Jo Bichar Gaye, every single detail and everything looks authentic, despite not being, exactly the same budget, or perhaps it doesn't have the location shots. So I'm So just going to definitely come back. Rana, could you? So I'm going to request you to mute the mic so we can hear you better when you're speaking, because when your mic, yeah, there you go, guys. For the less versed and for people who don't know, Rana plays a very nuanced and a very important character in Jo Bichar Gaye. And as Sadaf was pointing out, that this is a practically flawless show with so much attention to detail despite the very limited budget. So, without moving any further with any other tangents in the discussion, I want to thank Rana. Thank you so much for joining us, Rana. Now you can unmute the mic and talk to us. Rana, can you hear us? This is so much like a Hi, Zoom meeting. hi, 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 hi. Sadaf, We how can are hear you? you. But very well, thank you so much for I giving us hope your you guys time. can hear me clearly. बिल्कुल बिल्कुल जागती आंखों सुनते कानों सबकी आवाज आ रही है. Acha, zabardast. First of all, I want to say that I'm very grateful and I'm overwhelmed, humbled for all the appreciation I'm getting. Everybody, like the whole team, is getting like a lot of appreciation from everybody, whoever is watching it. So we are very thankful to all of you. We are thankful to you for creating this show and being a part of this. Sorry, can you repeat that? Yeah. I'm saying that we're so thankful for you for making the show and being a part of this. It's such a wonderful, wonderful show, and it's such a great effort from all of you. Yeah, Mevish, it's a special project for all of us because आई थिंक इस पे कभी बात नहीं हुई 1971 का जो नैरेटिव है जो हमारी तरफ से कभी भी नहीं दिया गया सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव मेड समथिंग लाइक दिस और क्रेडिट गोज टू हाइसम हुसैन एंड द होल टीम एंड द राइटर अली मोइन सो लाइक सारा क्रेडिट उनको जाता है फॉर पुटिंग अप सच अ ग्रेट सीरीज Rana, hi there. Your character is one of my favorites. मैं आपको बताऊं, I look for his scenes
क्योंकि there's so much bravado and kind of like it feels वो एक presence नहीं होती, screen presence. And without those huge sets or special effects, I guess that's the way the director has shot it, and obviously you've projected it on the screen. I just wanted to say wow. Thank you so much. This actually, means a lot. I always wanted to do something like different, something out of the box. So finally got something really special to play. I loved the character of Salahuddin. I gave my 100% to the character. So yeah, maybe that's why it came out so good. Alhamdulillah. But also, could you tell us, like, so many of us are watching every frame and every screen of the show. What does it what does a set like that work? How does it work? What is the kind of direction you take from Haisam, and what are the additions you make? And because every frame looks so, it looks like it's done with so much precision. So how does something like that Absolutely. actually? How do you pull something like that off? Well, Haisam Bhai is working on the script for a very long time, and I am sure he has been planning the whole time कि कैसे इसको shoot करना है, and how he want things in जो बिछड़ गए. So he had a completely different way of shooting it, a completely different way of directing it. I've never, seen a director like this before, like who was so involved with the project, who was so involved with each and every character. So he was very clear about each every character कि वो कैसा लगेगा, उसकी appearance क्या होगी, how he'll talk, सारी body language क्या होगी. I think काफी detail काम उन्होंने already किया हुआ था. So when we came aboard, he basically took our audition. I went there and I gave my audition. So in the first scene, I was like selected right there, and he was like, "You're done for Salahuddin," and I was like, "Okay." And then when I read the whole script, so I was like, यार this is amazing. Like मतलब इस तरह का content कभी बहुत कम मिलता है, और इतना जबरदस्त लिखा हुआ बहुत कम मिलता है. So I fell in love with Salahuddin, like वो कहते हैं ना, love at first sight. So इस तरह का scene था. What did you feel about the political side? Because I've noticed that one of the beautiful things, Mavish, I'm sorry if I interrupted you. No, no, Uh, no, no. Please go ahead. Please go ahead. Okay, I wanted to ask him because I know this is a very difficult political tightrope to walk. लेकिन आप लोगों ने बड़ी, I mean, I have to give you credit for this, कि you have tried to keep it very neutral, but you have presented a perspective. And I think that was a missing perspective that we have not heard or seen on our screens. And without diminishing anybody else's, किसी और का गम या तकलीफ हम लोग diminish नहीं करना चाहते in any single way, क्योंकि सब equal हैं. जब तकलीफ होती है, दर्द होती है, we all, जब as Shakespeare said, we all bleed the same color. तो I know I'm paraphrasing, मुझे correct वो नहीं आ रहा है, लेकिन I really admire the way कि he has kept that balance, the both writer and director. तो आप लोगों को how did you feel about working in such a strong subject? Absolutely, you are absolutely right. Well, actually, that's what I told you earlier, that when I read the script, I was so excited that I'm going to be a part of this amazing script, because वो इतना जबरदस्त लिखा होता है, इतना कमाल का कंटेंट था कि मुझे लग रहा था कि ये टीवी पे आएगा तो लोग कहेंगे कि लोग बाकी में अप्रिशिएट करेंगे. सो आई हैड दैट इन माइंड कि ऑब्वियसली इसकी उसको अप्रिसिएशन मिलेगी. सो या, I hope I answered your question well. No, I'm sure we have a lot more questions. If there are any other speakers who want to ask a question, you guys can ask a question and we'll try to put you on the mic. But please don't make your questions long, because we want to discuss a lot of other stuff also, and we want to move on to other points about the show. अच्छा, Um, आप लोगों को पता है that we actually we were trained for like 12 to 15 days before oh the wow, shoot. oh wow, Like we did each and everything जो आर्मी के लोग करते हैं, like the proper salute, the check 1 2, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, डिसिप्लिन कैसे होता है यूनिफॉर्म में, मतलब अगर आपने लेसेस भी बांधने हैं जूतों के तो वो किस तरफ होंगे, each and everything they taught us. wow. So that was something,
really great. Matlab, I had great experience during those drill days, those training days. All of us, all of the captains in Bichar Gaye. So we went through that process. So that is one reason why we were in the body language. Like the body language was absolutely correct. Well, that's wonderful. The attention to detail is truly there. We have Munia Shah who's there. So, Munia, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम Walaikum salam. जी राना फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन आप जो बिछड़ के कैरेक्टर की तो आप ये बताओ आप थैंक यू फॉर शेयरिंग द बीटीएस पिक्चर्स आप आई थिंक यू वन ऑफ दोस पीपल जो आप शेयर करते हो बाकी इतनी कोई निकली नहीं इसकी वीडियोस या पिक्चर्स इस प्ले की तो आप ये बताओ मुझे कि आपका ऑडिशन प्रोसेस क्या था कैसा था मतलब व्हिच सीन डिड यू ऑडिशन फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप मुझे मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, आपके ट्वीट्स भी पढ़ता रहता हूँ, और आई नो आपने आपने बहुत अप्रिशिएट किया, सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और जहां तक आपने बीटीएस पिक्चर्स की बात की, सो या उस वक्त ये होता था कि we never used to use our phone during the shoot। तो बहुत कम होता था कि हम लोग अपने फोन यूज करते थे। और प्लस एक तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा था उस टाइम कि लीक ना हो कोई चीज। सो दैट्स वन रीजन। लेकिन मैं चुपके चुपके जो अपना काम कर लेता था, और मुझे था कि लेटर ऑन आई पोस्ट दीज पिक्चर्स एंड बीटीएस स्टफ। सो या मेरे पास अभी काफी कंटेंट है अपना जो मैं आहिस्ता आहिस्ता और आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह, बिहाइंड द सीन्स जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। सो सेकेंडली आपने जो बात की कि ऑडिशन प्रोसेस क्या था, सो इट वाज लाइक ऑब्वियसली हाइसम हुसैन का नाम मैंने शुरू से सुना हुआ था, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से मैंने करियर स्टार्ट किया, बट नेवर मेट हिम बिफोर। सो आई गॉट अ कॉल कि हाइसम हुसैन इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू कम एंड और गिव योर ऑडिशन। सो आई वेंट देयर, आई मेट हाइसम भाई, ही वाज लाइक वेरी वेलकमिंग। सो दे गेव मी अ सीन जो यूनियन लीडर के साथ बाद में चला था, जिसमें मैं उसको थप्पड़ मारता हूँ। आपको याद हो पे लगा था। My सो favorite दैट scene. वाज द सीन। जी। Sorry to break your flow, but my No, favorite scene, your standoffs with the union leader, मैं उनका नाम भूल गई हूँ. He's such a fabulous actor as well. You guys had Fahad, such Fahad great is his name, chemistry. right? Yeah, Fahad Hashmi is the name. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. He Thank and you. characterizations and the way that you guys played off each other, it made those scenes so fascinating. Enjoyed them immensely. The best part is that each and every person, actors की बात कर रहा हूँ, each and every person, like, they performed like, मतलब कमाल का परफॉर्म किया सबने यार। मतलब मैं परेशान था कि एक प्रोजेक्ट में इतने जबरदस्त सारे एक्टर्स अपना जबरदस्त 100% दे रहे हैं, तो दैट्स अ बिग थिंग। और आई थिंक इसके लिए कास्टिंग का क्रेडिट जाता है आयसम भाई को, लाइक परफेक्ट कास्टिंग। उन्होंने एक एक बंदा अपने रोल के मुताबिक उन्होंने लिया है। सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। ऐसा होता नहीं है, इतनी कोई मेहनत करता नहीं है कास्टिंग पे आजकल। मैंने बहुत काम किया पहले भी, बट आई हैवंट सीन director going into so much detail. So yeah, that's one thing. Okay, I have Alia as a speaker. Alia, could you go ahead and ask your question, please? Yeah. Do you mind if I comment as well before asking the question? Yes, go ahead, please. Okay. So I'd like to first of all congratulate you, Rana, and your team for creating such a wonderful project. And just like Sadaf, I would also like to say that this is absolutely sublime, a very difficult topic, and the attention to details has probably created it the way it is now. As a linguist, I really love how much attention has been paid to the language delivery in Bangla, but also how they interact, the body language, and all other things as well. It's such a difficult topic. It's such a difficult topic in the psyche of Pakistani heritage and Pakistanis living in Pakistan as well. That every time I watch it, I actually clench uh, my hands, and I
kind of know, like, I don't know if I want to see what's happening next, even though my heart feels like I do want to know ke kya hua. Or also Pakistani narrative, which is also very important, which we also know that some of the things like ke Urdu, for instance, was also spoken in present day Bangladesh, just like all other regions. So some of the things that we have not heard in our history books. So this narrative is really important. My question is that being being a very difficult topic, and you being a Pakistani military captain, how do how did you come out of this role after finishing each episode? Like for me, watching Dastan was such a dramatic experience, and I really still feel the impact of that story. So, what about the actors? How do you go back to your normal life? Do you? Hi Alia, thank you so much for appreciating the work और आपने बड़े मजे के सवाल किए. Actually वाकई में we were so much into the characters. I don't know about the rest of the cast, but मैं अपना बताऊं, so it was very difficult to come out of this character because I genuinely uh, I was into the skin of Salahuddin basically. So because I'm a patriotic guy myself, and I can totally relate to these kind of stories के जो बहादुर हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जिंदगी में मिला हूं और मैं हमेशा इनकी कहानियां सुनना चाहता था और सुनता रहा हूँ जिन जिन से भी मिला हूं मैं आज तक. सो आई वाज ऑलवेज लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ आर्मी एंड ऑल के हाउ डू दे गाइस, यू नो, वो जज्बा क्या होता है, वो लड़ते कैसे हैं, और उस टाइम उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है वाइल फाइटिंग फॉर देयर कंट्री. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस आई मेट लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं ऑब्जर्व भी करता था ऑन सेट्स भी. मैं उनसे पूछता भी था कि यार सियाचिन में क्या करते थे, वो जब बताते थे पोस्टिंग इधर हुई है उधर हुई है, हम ये करते थे वो करते थे. सो एक्चुअली आई फेल्ट दैट थिंग कि यार वाकई में इन लोगों का जो जज्बा है वो आसमान पे होता है जब मुल्क के लिए लड़ना होता है. सो मैं उस चीज को बड़ा मैंने फील किया और उस चीज को अपने कैरेक्टर के अंदर मैं लेके आया. And to come out of that character was very difficult for me. I think अभी भी सलाउद्दीन जो है deep down inside वो रहेगा मेरी जिंदगी में. अब मैं किसी अगले प्रोजेक्ट पे जाऊंगा तो यू नो आई ट्राई टू कम आउट ऑफ द कैरेक्टर कंप्लीटली. बट मुझे जेन्युइनली अभी इतना मेरा कनेक्शन है सलाउद्दीन और जो बिछड़ गए के साथ, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड वी हैव वर्क रियली हार्ड फॉर इट. लाइक हमने ना दिन देखा ना रात देखा, ना ये देखा कि भूख लगी है, ना ये देखा कि यार चोट लग गई है तो अब क्या होगा. सो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड इट वाज बेसिकली अ टीम वर्क. I want to congratulate the whole team. Hats off to Haisambai, hats off to the DOP, the cameraman, all the people who are working behind the camera. So it's a team effort. And you talked about the accent, na Bengali accent. So I was like really impressed by each and every one. Like starting from Wahaj and then Umar Chima, and then Usman Zia, and obviously Fahad Hashmi. Like all of these guys, मतलब वो लग ही नहीं रहे कि ये मतलब कोई नॉर्मल लोग हैं, बाकी में लग रहे कि बंगाली हैं. और समझ रहे हैं आप. सो या अगर कोई और चीज आप मैं मिस कर गया हूँ तो प्लीज मुझे बताइए.
No, thank you so much. Thank you. Thank you. We'll come back if you have Alia. I think we hope to be joined by a few more people, so you guys can come back with your questions. We're happy to give you the mic. But if you think you're done with the questions, please remove yourself from the speaker so we can give the opportunity to others. And of course, if you have any questions, you can always come back. I have Khurram Azim, who's a writer, producer, director, and please go ahead, Khurram, and let us know what you think. Assalamu alaikum. It was really nice listening to all you guys talking about all this stuff. Actually, my question is more of a comment for everybody here. कि ये ड्रामा देख रहे हैं हम जो बिछड़ गए. It's an absolutely amazing drama. Especially some scenes in the latest episode was just mind blowing. तो मेरा क्वेश्चन है बिकॉज मैं खुद भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ. मेरीन जबार के साथ काफ़ी सारे ड्रामे किए हैं मैंने. तो माय क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान में क्या क्या है वजह कि हमारे पास जो बिछड़ गए जैसा ड्रामा बना है, जो इतना ज़बरदस्त है. राइटिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. और बाकी वहाँ पे भी ड्रामे बन रहे हैं जो जिनके बारे में हम रोज़ाना बात कर रहे होते हैं, जो सास बहू के झगड़ों से निकल के बनते ही नहीं है. तो माय जनरल क्वेश्चन है इसके क्या वजह है कि ये ड्रामा इतना ज़बरदस्त बन गया है और इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है. तो क्या डायरेक्टर की बात है, प्रोडक्शन टीम की बात है, या स्टोरी की बात है? क्या है वो वजह जो इस तरह का ड्रामा बन रहा है और दूसरी तरफ इतने बकवास ड्रामे बन रहे हैं जो यू नो जो हम हर रोज़ जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं. Okay. Are you Okay, going to thank take you. that, Mahwash, or shall I? Yeah, I'm gonna take that. That's Go, like right go, up my alley here. go for it. Okay, thank you so much for joining, and I'm gonna get Rana to also kind of weigh in on No, this. no, no. Obviously, Sadaf, you Please can go also. ahead. I'll talk later, like after you. Yeah, Sadaf is also something. This is also something I think Sadaf you can weigh in on. खुरम साहब, थैंक यू. आपने जो बिछड़ गए देखा. ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे ड्रामे नहीं बनते. इसी एक साल में जो ड्रामे बन रहे हैं, या जो दिल ना उम्मीद तो नहीं, अगर आई डोंट नो आपने देखा हो या नहीं, इस तरह के जी ड्रामे जी बनते देखा हैं. मैंने. जी, तो ऐसा है कि ड्रामे बनते हैं. लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है और लोगों को पैसा इसमें से भी कमाना है, तो ज़ाहिर है बहुत सारी मासी चीज़ें भी लोग बना रहे हैं. जो एक्टर आजकल काम कर रहा है या जो डायरेक्टर आजकल काम कर रहा है, वो समझ लीजिए कि वो अपनी मेहनत और पैशन से कर रहा है, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो छोटी-मोटी आप जो भी एक मेरे ख़्याल से एड फ़िल्म के अलावा कोई ख़ास पैसा नहीं कमा रहा. नहीं, ड्रामे में पैसा भी है, लेकिन उस तरह का नहीं है. और हम जब हमारा क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस बनता है कि यार नेटफ्लिक्स पे हमने ये देख लिया, ऑस्कर विनिंग फ़िल्म ये देख ली, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ बड़ी एस्टैब्लिश्ड हैं. आपको आई एम श्योर ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री से आ रहे हैं, वो या जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम क्रिटिक करते हैं, तो उसको ये कॉन्टेक्स्ट में देखना बड़ा ज़रूरी होता है. क्योंकि जो सास बहू के ड्रामे हैं, वो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी छाप बन गई है पाकिस्तानी ड्रामास की, जबकि ऐसा नहीं है. पाकिस्तानी ड्रामों में एक वाक़ई एक वक़्त ऐसा आया था कि वही मतलब एक बहुत ही डिग्रेडेड किस्म का कंटेंट बन रहा था, लेकिन वहीं पे बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट भी बना था. तो आई थिंक कि कुछ हद तक ज़ाहिर है एक लिमिटेड इंडस्ट्री का फ़ॉल्ट है, और उसकी मतलब इंडस्ट्री की अपनी ब्रेड्थ और स्कोप का फ़ॉल्ट है कि वो लिमिटेड है. और दूसरी तरफ एक जो छोटा-सा मार्केटिंग इश्यू है, वो ये है कि अब और स्पेशली आजकल के ज़माने में ये ज़्यादा हो गया है, और मैं इसके ऊपर बहुत बात भी कर चुकी हूँ कि एक ड्रामा उठाते हैं हम, उसका कोई 15 सेकंड का क्लिप चलता है और हम कहते हैं हमारे ड्रामों में ये ग्लोरीफाई हो रहा है और ये कैसे हो रहा है और इसको बंद करो, ये नंगा नाच, ये सब शुरू हो जाता है. तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे ड्रामों के लिए इस तरह डेट्रिमेंटल है कि हमारे बहुत सारे ड्रामे जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ड्रामा आजकल चल रहा है इब्ने हव्वा के नाम से, जो साजी गुल ने लिखा. साजी बहुत कमाल के लिखा रही हैं. साजी का एक ड्रामा, आई डोंट नो आपने देखा हो या नहीं, और अंग्रेज़ा नाम था, जिसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी सस्सी थी, दैट वाज़ प्लेड बाय सजल, एंड that was a brilliant character. I think it has to be one of the best female characters written in the history of Pakistani dramas. तो अभी उनका जो इब्ने हव्वा चल रहा है, इट्स एक्चुअली डीलिंग विद द रूट्स ऑफ मिसोजिनी, हाउ पीपल get prejudiced against the female gender when they are facing whatever they've faced in their lives. Of course, it has that masala and the entertainment element as well, but there are a lot of nuances to the dramas that we have. So even what I'm trying to say is that even if there's a saas bahu type of drama which you're like, अरे यार देखो ये तो बहू बोल रही है, उसकी शादी हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको वो साइकोलॉजिकल
एलिमेंट्स और नुआंसेस मिलते हैं. दैट इज ट्रू कि टिपिकल चीजें भी बन रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रोक्स ऑफ ब्रिलियंसेस भी नहीं होते. सो दैट्स माय रैंट एज ऑलवेज. सदफ, सदफ That's really good. आप थैंक यू. No, no, सदफ आप that is not a rant. That's a very fair points. You made a lot of good points, and sorry, Huram. I hope we are not lecturing you because you're a producer, director yourself. You probably know a little bit of this stuff, right? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है. I'm sure I love to hear what you have to say because मैं असल में मैं यूएसए में रहता हूँ, ज़्यादातर यहीं पे सारा काम करता हूँ. तो मुझे जो इंडस्ट्री के अंदर की जो टॉक है वो ज़्यादा मेरे ज़ाहिर सामने नहीं आती मेरी इतनी. तो मैं वाकई इस बात पे वो हूँ कि बाहर हम काम कर रहे होते हैं तो हम लोग एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं कि डायलॉग का ध्यान रख रहे होते हैं. और पाकिस्तान में कई के ड्रामे में ऐसे देखता हूँ जहाँ लगता है कि डायरेक्टर कमरे में था ही नहीं. जब उन्होंने ये डायलॉग बोले. Okay. तो yeah. Sadaf, I'd Yeah. like to add to what Okay. Mahwash just Go said, ahead. if it's okay. Yes. Yeah, Go ahead. I'd like to say we do need Saas Bahu ke drama too. We definitely need them. Oh, somebody's coming to cancel you right now. I know, but let me because the thing is, I mean, this is something we need in something which goes on in our culture. But I'm saying we don't need जो स्टार प्लस ने शुरू किया था सास भी कभी बहू थी. एंड मैंने ड्रामे जो है बेसिकली सदफ एंड महाविश को फॉलो करने के बाद देखने शुरू किए हैं. आई हैव हैड लाइक अ 10 years और मे बी 15 years गैप. मुझे याद कराएं वो ड्रामा जिसमें समीना पीरजादा एक आर्मी ऑफिसर की बीवी बनी हुई है, एंड वो भी बिल्कुल सास बहू का ड्रामा था, बट इट वाज Are you talking एब्सोल्युटली about Duray Shewar? yes, it Yeah. was That was also Haitham, by absolutely, the way. Yeah. yeah, it was absolutely wonderful. And I can say that it was very close to जो कि उसमें भी जो मिलिट्री फैमिली एंड ऑल दोस नुएंसेस, गरीब घर से जाते हैं, जॉइंट फैमिली और वो सारा, क्योंकि वो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी और इवन जो हेरिटेज पाकिस्तानी हेरिटेज के लोग बाहर रहते हैं, उनके वो ये हमारे फैमिली मसाइल ये चलते हैं. तो वी डू नीड दैट, बट वी डोंट नीड कोई वो जो ड्रामेटिक सास बहू Dun dun स्टार प्लस. dun. Yeah, we don't need that. We Lekin, definitely don't need Alia, that. this is what has happened though, and this is where Yes. this is what I wanted to point out. We are victims of our own success, and this is something maybe Khurram will understand. In the beginning, there was such a boom in I think 2012. Humsafar, Hamari Marine Jabar Ka Daam, right? Wasat, जी. these kind of dramas that Mehreen made fabulous dramas. Let us not forget. I mean, ye Haisam, Mehreen, Sarmad, these guys kind of blossomed the industry. I'm probably using the wrong words. The industry bloomed in their hands because they were very very detail oriented and their scripts amazing. I can't forget them. I mean, I would जी like to जी. rewatch episodes because it's so brilliant. But I even Mehreen's earlier work, मुझे याद है एक उसमें था with Faisal Qureshi was I've forgotten the name मलाल. of it, but yes, thank you very much. Okay, Yeah. so you think how long ago that was made? It's still in my head. The scenes chal rahe hain because it was so जी. perfect. All of these directors are wonderful. They played attention to detail. Now, jab se ye, but still they were losing customers to Indian dramas because Star Plus and these things have an audience. हम उनको dismiss करते हैं, उनको zero समझते हैं, लेकिन they have an audience. जो housewife होती है, basically जो TRP meters को चलाती है housewife, वो प्याज लहसुन अदरक whatever you can put her down, but she is your main audience. So she wants easily digestible stuff. So हाँ देखें, लेकिन I'm sorry आपको yeah, बात काट रहा हूँ, go लेकिन ahead. बात फिर वही आ जाती है ना कि पहले या आप अच्छे ड्रामे दिखाएं या आप वो ड्रामे दिखाएं जो लोग देखना चाह रहे हैं. How about अगर हम ये सोचते नहीं, रहें कि लेकिन हम दोनों वो क्यों नहीं हो बना रहे हैं जो सकता? लोग देखना नहीं, चाह रहे हैं, दोनों क्यों नहीं हो सकता? तो हर हर पूरी दुनिया में हाँ वही मैं कह रहा हूँ पूरी कि दुनिया ऐसे की क्यों नहीं हो सकता इंडस्ट्री कि में हम यही अच्छी चीजें होता है. बनाएं जो लोग देखना.
पूरी जी, लोगों की एपेटाइट बढ़ानी पड़ेगी ना कि अच्छी वो चीज़ें देखने की नहीं, ये तरफ ऐसे आएँ, नहीं होता। बजाय नहीं, इसके कि हम ऐसे वो चीज़ें ऐसे देते नहीं रहें होता। जो सॉरी, मैं भी आपकी बात ही काट रही हूँ। आई थिंक हम सब सारे बहुत जज़्बाती हो गए हैं। इट्स ओके, इट्स गुड। आई थिंक इट शोज़ हाउ मच वी केयर, राइट? सो या हाँ, बेचारा दैट्स राना जो दैट्स है ट्रू, इट बेचारा, शोज़ हाउ और मच एक वी केयर। जी, और एक या और स्पीकर आई थी, वो मेरे ख़्याल से मायूस होके चली गई। उन्होंने कहा इन लोगों ने सिर्फ़ आपस में बातें करती रही। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है यार, मैं देख रही हूँ। हाँ, हमारा कुछ नहीं सुन रहे हाँ, इन्होंने। उनका जी ये अपने आपस में ही लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, जो भी आप चले गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, वो वापस आ जाएँ। सो देखिए ये जो अभी डिबेट है ना, ये बहुत लंबी ये चल बहुत सकती लंबी है, चल सकती जिससे है। हम मैं आप बस सब क्विकली लोग ये बात रैप करें। करने के लिए मैं यही कह रही हूँ कि देखें, ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है कि कहीं न कहीं आपका एक क्रीम होता है, जो ऑस्कर्स के लिए जो फ़िल्में होती हैं, वो 1 हफ्ता चलती हैं, 5 दिन भी नहीं चलती हैं स्क्रीनों में। लेकिन उनकी जो प्रेस्टीज एसोसिएटेड होती है ना, हम ये नहीं कह सकते कि हम ऑडियंस को फोर्स करें कि वो जो बिछड़ गए को मास अपील दे, वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हाँ, जो बिछड़ गई की प्रेस्टीज है, उसको एलिवेट किया जाए, उसको वो ड्यू मिले। ऐसा ना हो कि वो कहीं माज़ी के किसी दरीचों में कहीं एब्सोल्युटली। गायब हो जाए। और जो 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 एक प्रेस्टीज देने का तरीका होता है ना, वो ये नहीं होता कि हमारे यहाँ जो एक, आई एम सॉरी लेकिन ये बात सच है, हमारे यहाँ लोग बैठ जाते हैं और फिर ट्रैश करना शुरू करते हैं ड्रामों को, और कहते हैं जी ये रिव्यू है, या ये हम अथॉरिटी हैं बताने के लिए कि ड्रामा क्या होना चाहिए। तो ये जब तक चीज़ बदलेगी नहीं, कि आपके पास क्रेडिबल वॉइसेस नहीं होंगी ना जब तक। और यकीन कीजिए, मैं इसमें सिर्फ एक आखिरी बात ये कह रही हूँ कि मैं और सदफ उस तरह के लोग हैं कि हमें हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हमें कोई ब्लॉगर नहीं देता, पैसे नहीं देता, किसी चीज के लिए पैसे नहीं मिलते हमें। हम ये कहना पैसे चाहते हैं जी। इस प्लेटफॉर्म के यार तवज्जुह से कि हमें ना हाइसम ने पैसे दिए, ना जियो ने पैसे दिए। बहुत अफसोस की बात है कि नहीं दिए, लेकिन नहीं दिए हम। yeah, please do I didn't get. It's 12:59 p.m. सकते हैं हमें, लेकिन हम Something went. से होगा नहीं। I once I remember when Bashir Momin was running, I said मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन nobody came and offered me any money, right? या It's सदफ, हम तो कहते ही रह गए, हमें तो कोई नहीं खरीद रहा। बट माय पॉइंट इज कि हम लोग जो जेन्युइन क्रिटिक्स हैं, या जो हम फॉर द लव ऑफ द शो, या फॉर द लव ऑफ द शो बिजनेस वाली जो भी right. हमारा कंटेंट है, हम उसके लिए बात करें। हम बेचारे राना को मौका दें। राना, प्लीज गो अहेड, आप अपनी कोई भी जो भी आप कहना चाह रहे हैं इस बारे में, या वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग मोर अबाउट जो बिछड़ गए? द फ्लोर इज योर्स। नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस सारी बात पे कि आई हैव अ थिएटर बैकग्राउंड। सो मैं अपने ए लेवल्स के बाद मैंने थिएटर बहुत किया, ए लेवल्स ड्यूरिंग द ए लेवल्स भी बहुत किया। सो वी यूज्ड टू राइट आवरसेल्व्स, वी यूज्ड टू क्रिएट न्यू स्टफ, और वी बैग्ड अ लॉट ऑफ अवार्ड्स बैक देन। तो एक बड़ी मैं होप लेके आया था इंडस्ट्री में कि यार ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स काम करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। Okay, we seem to have lost Rana. I hope he. हाँ, I think Rana was actually saying something very good कि Yeah. लोग लेके आते हैं, काफ़ी ख्वाहिशें लेके आते हैं कि हम इतना ज़बरदस्त ज़बरदस्त काम करेंगे, लेकिन जब इंडस्ट्री की रियलिटी से टक्कर होती है ना, तो फिर वो कई नॉच नीचे आ जाता है बंदा। यार, लेकिन एंड अगेन आई ये हर आई जगह हैव होता बीन है। ये थ्रू आप दिस, दैट्स किसी व्हाई भी मैं कह रहा हूँ ये कि किसी भी इंडस्ट्री में होता है, चाहे आप जर्नलिज्म में आए, चाहे आप साइकोलॉजी तक जैसी इंडस्ट्री देख लें। साइकोलॉजी तो बड़ी एक क्लियर कट सी चीज़ है, डॉक्टर बनना चाहिए। दुनिया में हर जगह होता है। पाकिस्तान में सिर्फ जो अलमिया है वो ये है कि जो ड्यू है ना पाकिस्तानी ड्रामों का, वो नहीं है। जितना उनको मिलना चाहिए प्रेस्टीज, वो नहीं है, ये बात है। बाकी जो चैलेंज होते हैं कि आप अपने ड्रीम्स लेकर आते हो, आप जूनियर से बंदे होते हो, आप स्टार्ट करते हो, ये दुनिया में हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में, हर जगह होता है।
और आई थिंक मेरा आप वहाँ काम करते हैं, आप यूएस में रहते हैं, Hmm. हॉलीवुड इज नो इजी फीट फॉर एनीवन. जी जी How many people बिल्कुल. come into Hollywood and how many turn into George Clooney's and Jennifer Anistons and whatnot? So, I mean, हाँ. yeah. So, I think Rana, we've lost him, but we hope to get him back soon. Sadaf, I want to talk about Joe Bichar Gaye's Hmm. kind of the way that it has taken on a narrative which hasn't been talked about. And I think इसके ऊपर Right. थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि attention to detail तो कमाल है ही, मतलब उसका तो एक अपना ही level है, लेकिन Oh, the dimension in which it is shot, wo mujhe, I keep appreciating every episode. I think I put it on my Insta, didn't I? Okay, the way he has captured the essence of the era and the way the dimensions, the framing of the scenes. Pata nahi main pagal हाँ. hu, mujhe bahut नहीं, maza. एक्चुअली इट्स ट्रू. फ्रेमिंग ऑफ द सीन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. जिस तरह वो कैमरा प्लेसमेंट की हुई है और जिस तरह कैमरा मूवमेंट की हुई है, दिस इज इट्स एक्चुअली वो पाकिस्तानी ड्रामे से कंपेयर करना भी उसको सही नहीं है, जिस क्वालिटी का वो बन रहा है इस वक्त. Thank you for that inside knowledge there, Khurram. And I also, I think Mavish has mentioned this. I don't know if you have or not, Mavish, but I think you should. I think there has been a missing narrative that Joe Bichar has brought. Yes, we understand what is the main narrative, but we also want to remember the Urdu-speaking people that migrated to Bangladesh, how they were victimized, how much they suffered, what they lost. जब ये drama शुरू हुआ, I was talking about it in several groups and people will say, हाँ मेरी दो खालाएं जो है वो अगवा हो गई थी. I mean, you think about it, जीती जागती इंसान थी. We don't know what happened to them. फलाना कहेगा हाँ मेरे मामू जो हैं वो शहादत पा गए, मेरे चाचा जो हैं वो ऐसे. Then they will tell you so many stories in and around, particularly वो जो ढाका यूनिवर्सिटी है. तो those people, their deaths, their pain has been ignored, and when we try to commemorate them, I think it's part of the healing process as well. जब आप किसी की पेन acknowledge करते हो, जब आप realize करते हो ये भी इंसान थे, इनका भी कोई हक था, जिंदगी पे उनकी ख्वाहिशें थी, and they had, it was not their fault. A lot of these people were civilians, whether I don't I feel it's very important we recognize these people. What do you say, Mavish? yeah, I think we've got Rana back, so I will Okay. definitely add to your point. One of the reasons why it's so close to my heart. Rana, you were saying something. Before I go on, we're अच्छा, moving आई on डोंट to नो the कहाँ तक आप लोगों ने subject सुना matter. है. आई डोंट नो कहाँ तक आप लोगों ने नहीं, सुना हमने ये सुना है कि आप बहुत उम्मीदें लेके पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ ए लेवल्स के बाद आए थे, थिएटर करने के बाद. यहाँ तक सुना था, उसके बाद प्लीज गो अहेड. है. अच्छा, उसके बाद मुझे लगा कि यार हम करना चाहते हैं, जो जो ड्रीम हम लेके आए हैं, हम वो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं हमें और बिल्कुल करेंगे. बट 2015 से ऐसी मोनोटनी स्टार्ट हुई है कि सास बहू सास बहू सास बहू सास बहू, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं रहा था. अगर हो रहा था तो बहुत कम हो रहे थे और हमें उसमें जाने का मौका नहीं मिलता था. तो प्रॉब्लम ये है कि इन दिस इंडस्ट्री नोबडी इज विलिंग टू टेक रिस्क. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु टेक रिस्क. बहुत कम लोग हैं जो आउट ऑफ बॉक्स चीज को लेके आते हैं. अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ साजी गुल की बात की. साजी गुल इज अ ग्रेट राइटर, बट उनकी भी अपने मुंह के अल्फाज हैं कि यार हम लोग बहुत कुछ डिफरेंट ले आते हैं, तो चैनल लेता नहीं है. चैनल कहता है यार ये तो समझ में नहीं आएगा हमको. बिल्कुल सही सो बात. ये प्रॉब्लम है. एंड प्लस कास्टिंग की बात करें, कास्टिंग एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ. मैं अक्सर कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब चैनल्स देख रहा होता हूँ ड्रामे, मैं अच्छा, इनको तो चैनल की कोई लगता है गाड़ी आई अपने थिंक जो वो कास्टिंग की बात कर रहे थे वो ये आई बिलीव कि वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में कास्टिंग का भी इशू ये है आजकल कि जो भी हम नजर आता है टीवी के ऊपर ड्रामे वो की बहुत रेटिंग बड़ी आगे, ड्रामा जैसा मर्जी था, जी इस जी बंदे को कास्ट कर ले, हमारे ड्रामे की भी रेटिंग आएगी. जी. तो राना, क्राइटेरिया ये है एक्चुअली. we lost you for a bit. Could you क्राइटेरिया ये है कि खूबसूरत लड़का चाहिए हमें, उसकी बॉडी होनी चाहिए और गोरा चिट्टा होना चाहिए और बस एक्टिंग हम करवा लेंगे. ये बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री. देखो Then there was another script called Sabat. मेरे दोस्त हैं काशिफ अनवर, he's a very good writer. So he was there, he was struggling with me शुरू में कराची. राना का जो है वो जब जूसी बात पे आते हैं उसी को
पड़ मा, जाता है। ये ये कोई अल्लाह की तरफ से रुकावट है, आई नहीं, थिंक, ये whenever कोई you want ये कोई बैठ के चैनल वाला सुन रहा है ये हमारी स्पेस, और ये उनका जाके कनेक्शन uh, जो है वो जाके वो कर। Mahwash, I would like to sorry say something what Sadaf earlier said about जो बिछड़ गए कि narrative जो missing था, उसमें एक चीज और भी है कि it wasn't just people जो कि उर्दू speaking लोग थे, they were living in Bangladesh. I mean, I personally know two I can say they कि वो uncles थे मेरी अम्मी की friend के father थे, they were missing and they were always treated as somebody who is missing और जो वो जिंदा हैं। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टोरीज आउटसाइड ऑफ सिंध या कराची की भी हैं, जो कि लोग क्योंकि इट वाज वन कंट्री और लोग वहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान के भी ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, बिजनेस के लिए जाते थे, एजुकेशन के लिए जाते थे। तो इट्स अ टॉपिक जो कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन को तो चाहिए, बट एज अ कैथारसिस जैसे सदफ ने बोला, we need that and we need stories, even though I said that we do need saas bahu wali kuch अच्छी stories, but we are so rich in stories जो कि हमें historically हम explore कर सकते हैं, मगर बहुत सी stories जो कि हमारे present है पाकिस्तान की ख़वातीन की, मर्दों की, जैसे जनरल निगार अभी आया, it was awesome as well. So just pay attention to details. Otherwise, I think if you go on YouTube and look at the number of viewerships of even जो के some dramas, I would just skip them and won't even pay attention to them. Even उनके भी आप देखें कि कई million views होते हैं. But of course, जो बिछड़ गए is not something that comes out without giving consideration to each and every element, जैसे storyline, actors, Alia, there's a lighting. collective trauma though. हम लोग चलो, even if you don't have a relative that's involved, जो जंगें होती हैं वो एक कौम के लिए, I'm going to ask Mavish because she must go into this because that's something we talk about regularly, कि there is a collective trauma from this war because हम लोग चाहते हैं कि इस चीज के बारे बात ना करें, and we are often cast as villains, we are not given our due, and this is because the government's own attitude के अपनी कोई ineptitude छुपाने के लिए absolute silence रखी हुई है, and the pain of the people has been ignored. Mavish, go ahead. Yeah, I mean, building on to what I think you were saying earlier, the reason why, and I was talking about it before, that the reason why this show is so close to my heart is because my family has faced the brutalities in West Pakistanis, as people from Bihar and UP who moved to Pakistan and who did not support the Awami League and who were directly targeted by Mukti Bhani. And to this day, my mother, whenever she recalls, and that's one of the reasons why she's not watching Jo Bishar Gaye, and she was just, I think I don't think she even reacted when I took her to see Khel Khel Mein, and she didn't know that this was going to be the film that she was going to see because she had no clue about क्या मैंने ऐसी कहा पाकिस्तानी फिल्में चली देखें, और फिर मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा, अम्मी आपको कैसी लगी, कहती बेटा ये तो हमने अपने मतलब सामने देखा है। तो वो उनका एक जो शौक है, वो उनके अभी तक उन लोगों के जिन्होंने इस वक्त को देखा था, वो 71 की वॉर में, वो शी वाज अ यंग वुमन, शी वाज अराउंड 16। सो मेरी फैमिली ने उनकी अपनी फर्स्ट कजिन्स के साथ, दे हैड टू एस्केप सेक्सुअल असॉल्ट, दे हैड टू दे वर टॉर्चर्ड बिकॉज they were not Bengalis. So like you said ke not disrespecting anything that happened to the Bengalis or the unfairness that Bengalis faced, but the fact that the kind of the way that it came back to West Pakistanis, to innocent people, is what Jo Bichhad Gaye is so fantastic about, is because you've got a protagonist at the center of the story, which is somebody who has that collective fit flopping, that conscientious fit flopping, like Rumi. You can see in his eyes that he's not sure what the hell he's doing there, but he is that person that कि यार मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बंगालियों के साथ हर चीज़ ठीक हो रही है, नहीं, there were problems, बट ऐसा जो उसके बाद हुआ है, वो जो उसका आपको उसका इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी पे और वैसा नज़र आता है, ये वही चीज़ है जो हम सब ने फेस की है, जो उसकी डिशहेवल्ड पूरी हालत है और जिस तरह पूरी मतलब फैमिलीज़ के साथ जो ट्रॉमा हो रहा है। सो वॉर का जो नैरेटिव है, अनफॉर्चुनेटली विक्टर्स को बिलोंग करता है। कोई भी वॉर हो, चाहिए, मैं इसके लिए बात नहीं कर रही। द नैरेटिव ऑफ द वॉर ऑलवेज बिलोंग्स टू द विनर। He gets to tell the story, he gets to tell who is the winner, he gets to tell how many victories he had. The loser will always end up justifying
or promoting whatever he can with whatever that resources are allowed to him. What Hisam has done, what this show has done, is take a little bit back of something. It was a grave mistake, and I talked about it before. That hi Rana, I hope you're no, fine. I think that your voice just keeps breaking also a lot. Could I you think go on your data or something? no, I'm on my Wi-Fi, but I think I should uh do something. Uh, अस्सलाम वालेकुम। जी ये कोई और स्पीकर हैं बोलना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड. हाँ जी, I'm मैं going to तो be in this space, but I'm not going to be in this space. There's a bit of a domestic crisis happening. Sadaf, you can please take over for a bit. Or I'll do that. I'll do it. Go ahead, Ibi. I think आपका नाम इबी है. Go ahead. जी, 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 मेरा नाम भी है। अभी जो राना माजिद भाई अभी एक बात कर रहे थे, तो मैं उसी को ही आगे लेके चलूँगा। बीच में उनके असल में बीच में आवाज़ भी कट गई। ये जो बिछड़ गए, ये तो मेरी वॉच लिस्ट में है, तो इंशाअल्लाह ताला सून मैं इसको देखूँगा। तो ये जो इन्होंने बात की ना ब्रॉडकास्टिंग वाली, उससे मुझे सिर्फ़ एक बात याद है। अभी मैं पिछले दिनों एक इंडियन स्पेस में बैठा हुआ था, तो उधर ये परिज़ात ड्रामे के बारे में बात चली ना, तो उन्होंने वो बता रहे थे, कहते हैं कि यार मैंने अपनी मदर को दिखाया ड्रामा, तो उनको मतलब बड़ा पसंद आया। लेकिन वो कभी मतलब वो इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही, तो क्या हुआ कि उन्होंने एक बार सोशल मीडिया ओपन किया, तो देखा कि यार वही जो एक्टर है, वो तो कहते हैं, "ये देखो, ये व्हाइट कैसे हो गया?" तो एक चीज़ और हमारे जो स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया के अब एक तो इंडियन मीडिया में चलो फिर भी ये चीज़ रिवॉल्यूशनाइज़ इस तरह हो गई है कि आप देखें नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और उस तरह के एक्टर्स वो लेने लग गए हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो मीडिया है उन्होंने ये चीज़ मतलब अभी तक उन्होंने अपनाई नहीं है कि यार जो जैसे कहते हैं ना ब्राउन एक्टर्स उनको ज़्यादा वो नहीं लेते या ब्लैक एक्टर्स को ज़्यादा वो नहीं लेते। इसी वजह से अब उन्होंने उसको जो है ना रंग करवाना पड़ा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी मीडिया में हैं और वो चेंज होनी चाहिए और आहिस्ता-आहिस्ता मैं देख रहा हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ रहा है, स्टोरीज़ चेंज हो रही हैं। अभी देखें आहिस्ता-आहिस्ता संगे माँ हो गया मतलब ऐसे एक स्टोरी एक वो जो एक पहले एक होता था सास-बहू का टिपिकल सास-बहू का जो ड्रामे होते थे, वो चेंज होते जा रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा है हमारे इस तरह होना चाहिए। तो मैं वही राना भाई की बात कहना चाह रहा था। मैं कहा थोड़ा-सा इसमें जो है ना एक चीज़ ऐड कर दूँ। नहीं, thank you जी very ब्रो, much. आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बोले Rana, please. You're a guest. Please go ahead. नहीं सदर प्लीज कंप्लीट ये थिंग, नहीं, मैं उसके बाद बोलता हूँ। he would say मुझे थोड़ा सा हो we talk about क्या परिजात for जी instance जी many actors देखो अगर the role requires डैशिंग बॉय थोड़ी सी फेंक के ना तो वो किसी को कर देते हैं थोड़ा सा राइट आई विल हैव टू से पाकिस्तान हैज द बेस्ट लुकिंग एक्टर्स इंक्लूडिंग राना ओके सो आई डोंट सी दिस थिंग थैंक यू। बट absolutely I love the entire cast of Joe Bichar Gaye but everybody looks heroic if their role is heroic if they are making you believe in themselves as a good person or whatever their character is so I noticed that there has been a change. Ahmad Ali used to look a little tan, and now because the fashion is thoda sa gora chitta hona, Pakistani dramas weren't like that. If you look at many Jabbar's old dramas, or even well, Haisam to खूबसूरत लोग ही चुनता है, or he's a little bit strict on that matter. But I think बाकी के drama जो directors हैं, people choose according to the role. And I don't see that there is, I think what you're नहीं saying. सदर पता क्या है, आप सही कह रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या, खूबसूरत लोगों से मसला नहीं, खूबसूरत लोग जरूर आए। मैं भी थोड़ा बहुत हूँ। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि खूबसूरत लोग अगर परफॉर्म नहीं ना कर रहे तो कोई फायदा नहीं है, दे नॉट एडिंग वैल्यू टू द प्रोजेक्ट। नहीं, Have you एक तो been ये seeing बात हो गई ना खूबसूरत tweets? बात, एक तो एक और Yeah, है, go वो on. इस तरह की है कि जो कहते हैं ना कि ब्राउन मैं कहता हूँ कि चलिए खूबसूरत लोग एक्टिंग करते हैं तो जो मतलब जिन को खूबसूरती नहीं है, तो वो भी एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं। मैं जो बेसिक पॉइंट कर रहा हूँ ऑब्वियसली ये कितने अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की लाइक सही तरह हक अदा किया उस रोल का। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे जो एक एज़ अ होल इंडस्ट्री है उसमें थोड़ी-सी इस चीज़ की कमी है। जैसा देखिए नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी है, ठीक है? अब वो हालाँकि ब्लैक है मतलब थोड़ा-सा उसका कलर थोड़ा-सा चेंज लेकिन वो फिर भी कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग करता है। तो मैं ये ये कहता हूँ कि आपकी ये सोच है ना कि डार्क कलर जो है ना देखें ये भी एक बायस है कि आप कह रहे हैं कि डार्क कलर जो है ना इट्स नॉट अट्रैक्टिव दैट्स नॉट ट्रू शाहरुख खान जो है ही इज डार्क एंड वी आर ऑल क्रेजी फॉर हिम एंटायर पाकिस्तान इज सो दैट्स आई विल डिसएग्री विद यू देयर Yes, बट Sada, I would या like to disagree with go Ibi. I ahead think
हमारे यहाँ मतलब ज़्यादातर जो हमारी डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं, एथनिक कम्युनिटीज़, हम लोग ज़्यादातर हमारी कॉम्प्लेक्शंस डार्कर हैं, और हमारे पास हमेशा से एक्टर्स रहे हैं जैसे शफी मोहम्मद हैं, व्हाट्स हिज नेम, तौकीर नासिर, एंड मैनी अदर्स Absolutely. जो कि नहीं ये मेन रोल्स अदा करते रहे हैं. आई वुड इवन से कि नदीम इज आल्सो नॉट दैट फेयर complexion. So I think there have been a mix, but yes, maybe we need a bit more. But I I think think there are many. there is, Alia, there has been a movement in these kind of pulp fiction dramas जो रोज चलते हैं कि there has been this के bright lights focus करके ना, तो everybody is wearing bright clothes and sets जो है inappropriately lavish हैं, and this is why you're getting the feel. Absolutely. So, but if you look at actual dramas like say Jo Bichar Gaye, Sange Ma, which in which the story is king, they're not using these bright lights. They're not painting people up. But I have to say, थोड़ा सा मैं appreciate करूंगी बात के टोरा खान को उन्होंने रखा नहीं for the wonderful actor Paris Masroor was skipped over. And Atif Aslam, a star. Atif is not fair, but he is a star and is very good looking, of course. So I think it's more to do with the producers' sense of what will bring in TRPs. So they do get into a bit of a rut that way. What do you say, Rana? Hello, Rana, can you hear me? Acha, chalo, we'll come back to Haji, him. can you hear me? I was thinking, yes, I can hear you. What do you think? I mean, with in Okay. Sange Ma, they skipped the actor of Paras Masroor's stature because he was brilliant as Tora Khan, or they brought in a star instead, and that's something I'm complaining. I would like actual actors in pivotal roles, please. I'm not. अच्छा, I'm really sorry. I haven't seen Sangema. अभी तक मैं देख नहीं पाया. So I wouldn't know. Okay. Yeah. So okay, but this is I one know of my Atif is there, Kubra is there, Numan sir is there. yeah. His son is there, Zavia. So, but I don't know the story. I haven't seen the drama yet. Okay, did you see Sange Marmar? I think fans of Sange Marmar will remember that Paras Masroor played Tora Khan. He was a pivotal character, and he so for the next one, and they didn't choose, as the young man was saying, Ibi was saying, okay, they didn't choose a darker character for Pariza, which they could have done. But I mean, isn't that part of the actor's But देखिए ना, way of character? बट आप कह रहे हैं ना कि वो डाकर के कैरेक्टर को रखना चाहिए था परिजाद में. बट आप देखें, अहमद अली अकबर, आई डोंट नो द गाय, मैं उससे मिला नहीं हूं कभी, बट ही इज अ ग्रेट एक्टर. लाइक आफ्टर Right. परिजाद, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क. लाइक उसको बेशक डार्क किया उन्होंने, बट उसने बड़ा कन्विंसिंगली, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, और वो लग रहा था परिजाद. सो इट डजंट मैटर कि देखें, बात सिर्फ परफॉर्मेंस की हो रही है. वो खूबसूरत हों, फेयर लोग हों, या थोड़े डार्क टोन के लोग हों, बात परफॉर्मेंस की हो रही है कि अपने कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग हुई है या नहीं. बस ये पॉइंट है. बाकी तो ऑब्वियस. हाँ जी. Rana, what's happening now is I think ZQ was on Twitter. Zainab Kayoum, जो actress हैं, तो जी उन्होंने जी कहा जी है जी. कि advertisers are dictating कि which actors should be in the lead role. वरना हम advertise नहीं उसके साथ करेंगे. So हाँ, these ये kind of, भी मसले हैं there are हमारे. lot of pressures. अच्छा, इससे भी Let's ज़्यादा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें go ahead. कि ज़्यादा चीज़ जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो है वो ये है कि चाहे रंग गोरा हो या काला हो, वो सारे जो एक्टर्स हैं वो एक तरह से मेड अप लगते हैं. लास्ट ऑफ जेल दैट्स होता सो है ट्रू. और बाल जो हैं वो आसमान की तरफ ज़्यादा कुछ उठे होते हैं हर बंदे के, चाहे वो जिस तरह का भी रोल हो. दैट्स अ ऐसे ही है, बिगर ऐसे ही. प्रॉब्लम देन गोरा और काला होने का. जो यानी कि जो आम सभी एक कैरेक्टर होगा उसके भी बाल इस तरह के बने हुए होंगे कि समझ नहीं आती आजकल ये सारे क्या एक ही डिजाइनर से बनवा रहे हैं, क्या हो रहा है ये चक्कर. नहीं, वो Uh, सीन ये ना, आप सही बात कर रहे हैं. वो होता ये कि बंदा सो के भी उठता है तो जेल्ड होते हैं हाँ, बाल, बाल बिल्कुल ये सेट होते हैं. हम लोग फिल्म से ज़्यादा guys, जेल यूज कर रहे हैं अपने ड्रामों में. but ऐसे ही. we were talking about dramas of pulp fiction. They go try and make a distinction. There is
the dramas like Sangema, like Jo Bichar Gaye, that have made an effort in the story, and then they are the everyday dramas that are kind of like I think of as chalo they do resonate with the masses. वो messy किस्म के drama होते हैं. So वो जो audience है, they want those रंग बिरंगे कपड़े, they want those lavish sets, and they want कि जी जो hero है वो रोज सुबह उठ के उसके बालों में जेल लगी है. That वो drama चलता है. But we can't like compare them to Jo Bichar Gaye, of course, ना. हाँ नहीं Absolutely. नहीं ऑफ कोर्स जो वही तो बात मुझे अच्छी लगी है जो बिछड़ गए में कि उसमें जो रूमी जब काफी से 5-6 महीने गुजार के आया तो नजर आ रहा था कि उसने कहीं बाहर गुजारे हैं, उसने किसी गंदी सी जगह पे रहा है, वो जो भी है इस तरह ये एक मफरूर ज़ाहिर शख्स है तो उसकी हालत जो थी वो नजर आ रही थी. दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस ड्रामा कि उसमें अटेंशन टू डिटेल जो है वो बहुत ज्यादा है. Now, I am going to say जी. that Mahwash Ali and Maya Ali and entire cast, and of course Talha Chahur, he is like a मुझे तलहा ऐसे लगता है जैसे कोई दिलीप कुमार टाइप का एक्टर हो. He's such a classic good looks, and then हाँ हाँ नहीं ऐसे ही है. true. हल्की, and it's very organic. It doesn't look forced at all, na. So he's very sweet when we listen to his interviews as well. So, but talent first, capabilities first. चलो looks भी साथ में ले लेते हैं. We can't help ourselves. So, ये वो but, आपने सारी जो हमने पिछली सारी बातें की हैं वो सारी निगेट कर दी यहाँ पे आके. well, हाँ नहीं नहीं, मतलब लुक्स तो इम्पोर्टेंट है. मैंने कहीं ये मैंने कहीं ये नहीं कहा कि लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है. लुक्स इम्पोर्टेंट हैं, बट द थिंग इज के लुक्स के साथ साथ कुछ मतलब करना भी तो चाहिए ना इंसान को. हाँ टैलेंट भी होना चाहिए. टैलेंट भी होना एग्जैक्टली टैलेंट भी चाहिए. होना चाहिए. I have noticed आप that when देखें, an आप देखिए actor is इंडस्ट्री में fitting मॉडल्स, into अब a role, मॉडल्स को देखें जो मॉडल्स एक्टिंग करने आते हैं, दे आर ऑल वेरी गुड लुकिंग. बड़े एक ही तरह के चेहरे, बड़े एक ही तरह की फिजिक और सारा कुछ. बट दे आई एम सॉरी टू से नो हार्ड फीलिंग्स एंड नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट दे कैन नॉट एक्ट टू सेव देयर लाइव्स. I agree. हाँ Can you hear? can you Yes. hear? Yes. Yeah, okay, we have sorry, I'm back. I'll Okay. keep coming and going. We have two more speakers, Rana Saab and Abida. Abida, could you go ahead first? Okay, we can't hear from Abida. Okay, sorry, you guys were saying. I think I had just negated myself as far as looks go. नहीं, looks तो अच्छे हैं, लेकिन I think that any actor can be attractive and look good अगर वो अपने role में fit जा रहे होते हैं, right? Absolutely, that's the point. And there's also this thing कि हम लोग कहते हैं ओ फलाना good looking है. That is just one idea of good looking. Attractive हर कोई लगता है आपको if मैं the, सही है. yeah. आप देखिए ना, जो लोग डिटेल में काम करते हैं, जैसे डायरेक्टर्स जो लोग डिटेल में काम करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका कोई अगर एक सीन के लिए भी कैरेक्टर आ रहा है ना, तो वो भी अच्छा काम करके जाए. वो इस चीज का ख्याल रखते हैं. लेकिन अक्सर मैं बड़े बड़े ड्रामों में देखता हूँ, जो बहुत बड़े बड़े ड्रामे हैं, इनकी इतनी हाइप क्रिएट की जाती है और वो लगे होते हैं जबरदस्त, बाकी लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल का सीन आता है, उसमें एक नर्स या डॉक्टर आके कहती हैं कि जी सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा पाए, उनकी डेथ हो गई. हाँ यार रियली दिस रियली इट्स मी यार. ये जो इस तरह के बीच में मुलाजिम आता है ना कोई, वो ऐसे बोलता है जैसे बिल्कुल ही उसको जुमला नहीं नहीं, बोलना मैं नहीं चाहता. मुलाजिम तो चले फिर अपने तरीके से बात करेगा. मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर आ रही है, डॉक्टर आ रही है और वो ये बात कर रही है ऐसे. नहीं तो डॉक्टर छोड़े, हम तो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना. कैरेक्टर होगा अम्मा जान का या अब्बा जान का, या वो लव इंटरेस्ट होगा सेकेंडरी, और उसने बोलना हाँ. वो उमर शरीफ के, बकौल उमर शरीफ के, बड़ा मजेदार वो एक सीन था कि जिसमें वो एक लड़की को एक्टिंग करना सिखा रहा होता है. तो वो कहता है कि तुम ये बोलो कि सलीम मैं तुमसे प्यार करती हूँ. तो वो आगे से कहती है सलीम मैं तुमसे प्यार करती हूँ. तो कहते तुम सलीम से प्यार का इकरार कर रही हो, दही मंगवा रही हो, क्या कर रही हो तुम? तो हम लोग क्या यही है, ऐसे ऐसे एक्टर्स ऐसे ऐसे स्क्रीन पे आते हैं और आप कहते हो यार ये कैसे हो सकता है कि इतने अच्छे मंजे हुए अदाकार जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, और ये डब्बा एक्टर्स आके बोलते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिससे बेहतर है कि बंदा डूब के मर जाए. Absolutely. No, this has been happening a देखिए, lot. मैं आपको अपनी बात बताऊं. एज
I think we lost Rana again, but I've been complaining a lot on Twitter about this recently. Please, and this is a plea to all directors and casting agents, whatever. Can we actually have good actors in pivotal roles? Sometimes I see dramas, those stars जो हैं, they have very little role because they don't deserve it. और वो जो बाकी के villains हैं और side actors, वो carry कर रहे होते हैं पूरे drama को, because of their ability to act and their ability to be convincing on screen. So देखें, एक और भी चीज़ है इसमें, हमें ये करना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ कोई एकेडमी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्टर्स को ट्रेन करे। नहीं नो भाई, क्या नापा पाकिस्तान में है, क्या सिचुएशन हो है, गया है, नापा है। लेकिन आप देखें वो एक है ना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने सारे ड्रामे चल रहे हैं, इतने सारे चैनल तो हैं, जो एक है लेकिन उसी के ग्रेजुएट्स नहीं संभल रहे हमसे। आप बाकी हम बाकी खोल के क्या करेंगे? वो भी यही होगा, चिराग आई खोल के डोंट नो, अंधेरा। मैं अक्सर एक्टर ढूंढ रहा होता हूँ, एंड देन इट्स लाइक एक्टिंग नहीं, ये की कास्ट जो करें आप, है। राना को कास्ट करें आप। हाँ, डेफिनेटली हम वो तो डेफिनेटली करेंगे, वही तो मैं तो अच्छे एक्टर्स ऑलवेज ढूंढ रहा होता हूँ हम लोग यहाँ पे। लेकिन मसला ये ना कि मैं अमेरिका में नहीं काम कर रहा हूँ, आप तो मुझसे और सदफ से बात कर लिया करें, हम आपको ढूंढ के दे देंगे। डेफिनेटली आई वुड लव दैट एक्चुअली, क्योंकि ये सबसे बड़ी इशू होता है हमें यहाँ काम करते हुए कि यार एक्टर्स नहीं मिल रहे होते। और वैसे अच्छे एक्टर्स कहाँ से निकल रहे हैं? आप देखें कैसे निकलेंगे अच्छे एक्टर्स पाकिस्तान में। आप मुझे बताएं ना कि जब ड्रामे इस तरह के बनते रहेंगे तो अब ये जो बिछड़ गए तो कई सालों में एक दफा आता है इस तरह का ड्रामा। नहीं, ऐसा नहीं उसके है, अलावा ऐसा जो नहीं है। पाकिस्तान में बन रहा है उसमें से एक्टिंग नहीं सीख तो नहीं, नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है, ये आप ज्यादती कर रहे हैं थोड़ी सी। ऐसी बात नहीं है, बड़े अच्छे ड्रामे बन भी रहे हैं, बड़े अच्छे एक्टर्स निकल भी रहे हैं, आप देखने की बात है। फॉर एग्जाम्पल संगे मरमर में तौरा खान जो पारस मसरूर साहब बने थे, वो कमाल के अदाकार हैं और उनको जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। और वो अक्सर रिड्यूस्ड हो जाते हैं छोटे छोटे साइड कैरेक्टर्स में, लेकिन जबरदस्त अदाकार हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे अदाकार हैं जो पुराने मंझे हुए लोग हैं, जो कर रहे हैं ड्रामे, मगर अब जो आप बात कर रहे हैं या जो सदफ और मैं जिस चीज को पीट रहे हैं वो ये है कि उनको रोल्स बड़े नहीं मिल रहे हैं। ये नहीं है कि वो एक्टिंग कर नहीं रहे या वो आ नहीं रहे, उनको रोल्स जो उनके शायान शान जो रोल्स हैं वो उनको नहीं दिए जाते, क्योंकि लुक्स हैं, लॉबीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सलीम मिराज हैं, कमाल के अदाकार हैं। और जितना, और अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जो आपकी जो एलिवेशन आपको मिलनी चाहिए ना आपके एक्टर्स को भी। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक्टर सबसे सस्ता और सबसे आसान टारगेट होता है किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे लिबरल्स हों, चाहे कंजर्वेटिव्स हों, चाहे वो कमेंटेटर्स हों। अभी भी आप देख लें, अब ये बेचारा एक्टर है, इसने इसका क्या मतलब हो सकता है कि इसका कितना कंट्रोल होगा किसी चीज के ऊपर। राना की बात करते हैं, हम अक्सर स्पेसेस करते हैं जिसमें एक्टर्स आते हैं, या एक दफा मैं माहिरा के साथ जब मैं तो जी बहुत ही बेचारा हूँ। कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। बस आप बेसिकली अगर आप देखें तो एक्टर्स का कंट्रोल होना, एक्टर्स का तो कंट्रोल होना भी नहीं चाहिए ना, डायरेक्टर का कंट्रोल होना चाहिए, एक्टर का तो होना भी नहीं चाहिए कंट्रोल। ये तो नहीं, क्यों नहीं है, होता है, बड़े एक्टर्स का नहीं होता, बिल्कुल होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर का कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज जो बेसिकली जो एक्टर है उसको एक्टर को कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एक्टर को अपनी एक्टिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, बाकी जो है वो डायरेक्टर का नहीं। देखिए, मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ, जैसे आई एम श्योर राना ने भी इस चीज़ के ऊपर लबकुशाई की है, कि यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके के पैरेलल स्ट्रीम्स भी चलती हैं। अच्छे एक्टर्स भी आते हैं, बुरे एक्टर्स भी आते हैं। बुरे एक्टर्स को कभी कभी उनके हक से ज़्यादा उनको मिल जाता है, और अच्छे एक्टर्स को, जैसे राना मौजूद हैं इस वक्त, तो उनको भी पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। बट अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो अच्छे एक्टर्स हैं उनके लिए लॉबिंग जो है वो एक बड़ा खेल बन जाता है। क्योंकि जैसे सदफ ने एक चीज़ पॉइंट आउट की, नाम लिए बगैर हम ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत ऐसे एक्टर्स जो कि डिजर्व करते हैं ज़्यादा ड्यू एक बड़े प्रोजेक्ट में, वो एक्टर ले जाता है या वो अवार्ड ले जाता है, जो कि उनकी को पीछे दोस्ती यारी होती है, कोई उन्होंने अपना कोई और मकसद होता है, किसी शो ऑर्गेनाइजर या चैनल के वो कोई अजीजी होते हैं, जो भी होते हैं। और जो दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि जो माहिरा के साथ मेरी कुछ अरसे पहले मुलाकात हुई थी, और जब मैं उनसे एक है निगार के क्रिटिसिज्म के ऊपर बात कर रही थी, चलें अब तो माहिरा एज अ प्रोड्यूसर भी शायद जवाब दे सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सोल फ्राई फिल्म्स उनका एक चीज़ है जो वो कर रही हैं। लेकिन मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि माहिरा से जब भी मेरी बात हुई है, जब वो प्रोड्यूसर नहीं भी थी, हमेशा वो क्रिटिसिज्म फेस करती है
उसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता हम सफर किसने डायरेक्ट किया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शहरजाद किसने लिखा, लेकिन जो सवाल होता है वो माहिरा से पूछते, व्हाई इज माहिरा खान डूइंग सच अ प्ले। उमेरा अहमद तो ना इंटरव्यू देती हैं, ना वो स्क्रीन पे आती हैं, ना वो सोशल मीडिया को खुद मैनेज करती हैं, ना वो जी, खुद करती बिल्कुल। हैं, ठीक है। लेकिन माहिरा ने हम कहाँ के सच्चे के लिए माहिरा ने फ्लैग बर्दाश्त किया, उस्मान मुख्तार ने बर्दाश्त किया, सब लोगों ने सुना और उनको शायद कुछ हद तक जवाब भी देना पड़ा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे यहाँ जो एक कॉन्वर्जेशन का जो भी एक स्ट्रीम है ना, वो भी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हम किसी से कोई भी सवाल करने खड़े हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं राना से पूछने से, अच्छा भाई इतने कम बजट में क्यों बनाया आपने जो बिछड़ गया? भाई वो क्या करे बेचारा, वो खुद एक छोटा सा एक्टर है, रोल के अंदर वो कितनी कितनी चीजों पे कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी एक्टिंग पे कंट्रोल कर सकता है, वहां उसने डिलीवर किया है। लेकिन just going back to Rana is here with us. I hope that your internet does not betray you again. But Rana, I wanted to ask you. I wanted to ask you about the preparation you did. You talked about the preparation to behave as a soldier. Did you do any kind of reading into the material of the historical accuracy or the historical background of the show? जी, वो रिसर्च तब करना बनती थी जब अगर स्क्रिप्ट अच्छा ना होता। स्क्रिप्ट इटसेल्फ बड़ा जबरदस्त लिखा गया था, तो मुझे एक्स्ट्रा रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्क्रिप्ट पढ़ के ही मुझे आइडिया हो गया था, और वैसे थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पे चीजें देखी या गूगल की चीजें, बट नॉट रियली इतना मैं उसमें नहीं गया, कंटेंट में नहीं गया। कंटेंट ऑलरेडी बड़ा जबरदस्त बना और हुआ था, उसके बाद क्या आपने क्योंकि उसको जब अब आप फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो और जब आप फीडबैक भी मिल रहा है लोगों से, मेरे जैसे लोग सदफ और भी बहुत सारे हमारे यहाँ बैठे हैं लोग जो कि इतना अच्छा जी जी फीडबैक दे जी। रहे हैं, तो क्या अब कैसा पर्सपेक्टिव लगता है, अब कैसे आप देखते हैं उस काम को जो आपने किया था? I am actually really happy. I'm very glad. I'm proud to be a part of जो बिछड़ गए, और जो प्यार मिल रहा है, जो अप्रिसिएशन मिल रही है। मुझे शुरू में ही जब मैंने पहली 2-3 एपिसोड्स देख ली थी, जब ऑन एयर हुई थी 3 एपिसोड्स, मुझे तभी आइडिया हो गया था कि इट्स अ मास्टरपीस। एब्सोल्युटली इट्स अ मास्टरपीस। नॉट दैट अच्छा, ये बताएं, आई जब आप एम। बना रहे थे तब कैसा फील कर रहे थे? तब लग रहा था कि ये कुछ अमेजिंग चीज बन रही है, या उस वक्त नहीं एहसास हो सर, रहा मैं आप बनाना तो दूर की बात है, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा था तो तभी मुझे समझ लगी थी कि कोई बला चीज है। था? क्योंकि इतनी जबरदस्त सिचुएशन थी। अभी तो कुछ सीन्स ऑब्वियसली डायरेक्टर की कॉल होती है, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को देखना होता है। बहुत सारे सीन्स तो अभी कटे हैं, बहुत सारे सीन्स तो आए नहीं अभी प्रोजेक्ट तो के ये अंदर, जो बड़े। अनकट, चलिए ये तो आप हमारे लिए कर सकते हैं कि आप एक अनकट वर्जन जो है वो प्लीज जरा रिलीज तो करें ना, या डिलीटेड सीन्स का एक अलग से कुछ कुछ आई करें, उसका थिंक यू शुड रिक्वेस्ट यू करें। शुड कांटेक्ट हाइसम हुसैन फॉर दैट। अरे वो इतने No, no, एलूसिव even, जीनियस हैं, उनको कहाँ से कांटेक्ट करें हाँ, हम? पहले वो डीवीडीज नहीं, आती थी जिनमें डिलीटेड सीन्स होते थे, अब तो पाकिस्तानी बिल्कुल। ड्रामों का तो वो सिस्टम भी नहीं, नहीं है, कुछ निकलना I चाहिए अब। I मैं think आपको he बताऊं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आने चाहिए, उनको रिलीज करना चाहिए यूट्यूब पे या कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ये मैं बिल्कुल आई विल कन्वे योर I'm मैसेज not आल्सो। sure. I'm not sure. I did message him on, I think, episode 6 or something. So he said to me certain scenes had been deleted, लेकिन आपको फिर भी पसंद आया। So we have to give, जो भी delete भी कर रहा है ना, वो भी अच्छे तरीके से कर रहा है, because नहीं नहीं, the एब्सोल्युटली। episodes are देखिए, still इट्स डायरेक्टर्स कॉल, इट्स डायरेक्टर्स कॉल। ही yeah. नोज कि उसने कैसे दिखाना है प्रोजेक्ट को, Hmm. कौन सी टेक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। वो देखें, हम इतनी वो जब तक परफेक्शन नहीं ना निकाल लेते सीन में से, वो हाँ सीन की जान नहीं छोड़ते। अच्छा हाँ, वो तो राना लग रहा है बताएं, यार, देख के लगता है वो डांट तो। पड़ी है डायरेक्टर से, डांटे पड़ी है नहीं? वैसे नॉर्मली तो नहीं पड़ती, बट हाइसम भाई से पड़ती है। बट हम हमारी हमारी जो बॉन्ड था बड़ा जबरदस्त था पूरी टीम का। तो अच्छा, तो हाइसम भाई जैसे was ये very तो बड़ी comfortable with ये the बातें सारी करते हैं character. राना, ये बातें सारी करते हैं, बड़ा अच्छा बॉन्ड था, बड़ा मजा आया। जरा गॉसिप देना आप हमें, ताकि हम आपका अगला प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल कर दें। नहीं, आई एम जोकिंग। नहीं, ऐसी कोई गॉसिप है नहीं, बट ऑब्वियसली हाइसम भाई जब हम सुनते नहीं है ठीक से तो तब डांट पड़ती है। या कभी कभार वो आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, कभी कभार आप वो चीज डिलीवर ना कर पाओ तो वो थोड़ा सा होता है, यार तुम क्या कर रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो ऐसा कभी कभार हो जाता था, बट नॉट दैट कुछ सीरियस कभी भी नहीं, नेवर। अच्छा, आई आगे थिंक व्हाट वी आर ऑल योर हैड अ लॉट प्लान्स? ऑफ फन व्हाइल शूटिंग। What are your plans for your upcoming shows, and are you please tell me you're getting more offers now at least?
वेल कुछ ऑफर्स तो आई हैं, बट इतनी कुछ जबरदस्त ऑफर्स नहीं आई जैसा कि मैंने कहा जो मैं करना चाहता हूँ। लाइक स्पेशली आफ्टर जो बिछड़ के, मेरा अपना माइंडसेट इज टोटली डिफरेंट राइट नाउ। या he's ruined everything for us actually, हमारे लिए भी उन्होंने ruin कर दिया है। हम कोई मतलब और अब ड्रामा भी मुझे देखते हैं। देखिए, मैं साथ में हाँ, एक अब बात ड्रामा कह रहा कैसे, हूँ। अब कैसा, कहाँ से लाएंगे इस तरह का ड्रामा यार दोबारा ये कुछ बड़ा अरसे प्रॉब्लम बाद? है सर, बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि ऐसा ही कोई ड्रामा जबरदस्त किस्म का है, बट ऑब्वियसली कुछ कुछ अच्छा तो आए, कुछ मीनिंगफुल हाँ, तो आए, कुछ जबरदस्त कैरेक्टर तो आए जिसमें कोई काम करने का मजा तो आए, कोई मार्जिन तो हो एक्टिंग का। वरना मोस्टली कैरेक्टर्स बेचारे कैरेक्टर्स होते ही नहीं है वो तो क्या कैरेक्टर्स मतलब है होते ही आपका, नहीं आपको ऐसा नहीं मिला डायलॉग के आई एम सो सॉरी हम उनको बिल्कुल नहीं बचा सके, आई एम वेरी सॉरी हम उनको बिल्कुल नहीं बचा है। सके? मुझे तो बहुत डायलॉग मिले जी। और वो जो नॉर्मल ड्रामे हम कर रहे होते हैं सास बहू वाले, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इम्प्रोवाइज करूँ, और ओए होए जैसा होए। स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा ना बोलूं, क्योंकि अगर वैसा बोलोगे तो वो बेकार है फिर। अच्छा वैसे मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन इनको मालूम है, सदफ से मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं नाम नहीं ले रही। मुझे एक इंडस्ट्री के कोई साहब मिले और उन्होंने मुझे मतलब साहब भी मिले, एक साहिबा मिली, बहुत सारे लोग मिले जो जी इन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सारे हिट ड्रामे इस साल के नहीं, पिछले एक आध साल के जो ड्रामे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग जो कि मशहूर हुए हैं। ये नहीं कि मैं कोई एक जी। रैंडम डायलॉग में इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रही हूँ, ऐसे डायलॉग जो मशहूर हुए हैं वो उस अदाकार ने खुद लिखे हुए हैं और वो स्क्रिप्ट में नहीं थे। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हम खुद बैठ के कभी-कभी सीन्स बना रहे होते हैं क्योंकि हम हमें जो सामने स्क्रिप्ट आता है हम कहते हैं यार ये तो नहीं हम बोल सकते, ये तो मुझसे ना एब्सोल्युटली, हो मुझे पाएगा। भी लगता है कि ज्यादातर जो ड्रामे हैं, हमारे पास कमाल राइटर्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो ड्रामे मुझे लगता है कोई मेहमान आए हो तो उनके साथ भी बैठे लिख रहे होते हैं राइटर्स हमारे। ऐसे ऐसे सीन्स भी होते व्हाट डू यू हैं। मीन? डू यू मीन दीस डायलॉग्स व्हिच आर सुने आप बैठे मैं फ्रेश होके आती हूँ आर नॉट जी। ओरिजिनल? गैस्प। वाह, फ्रेश होके आते हैं, आप आइए ना, आप आ गए। चाय चाय आप आप आ कब आए? गए? अरे आप कब आए? चाय पी लीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। देखो जाओ भाई हाँ के लिए जूस हाँ लेकर आओ, शाबाश बेटा। हाँ, वो और जूस वही आप येलो क्या रंग का जूस आता है सुबह सुबह। अच्छा वो अच्छा सारे वैसे सारे आपने जो येलो रंग का ऑरेंज जूस पी रहे होते येलो रंग का ऑरेंज जो टैंग होता है बेसिकली, है ना? हैं। did you So see yeah, that scene in Amushte Khak? कितना serious and it's I like can the see I can see सुहेल जावेद साहब जी ही इज हमारी। आई एम हाँ, आस्किंग, ये बड़े ये बोलते नहीं है, मैं इनको रिक्वेस्ट करती रहती हूँ लेकिन ये बोलते इनको नहीं है। प्लीज मौका दें कि ये बोले, और हम दे रहे हैं मौका मौका, वो डालें ले scene नहीं रहे, को, क्योंकि वो he मौका he's ले one नहीं of the रहे। he's one of the finest directors we have. नो एब्सोल्युटली, इनको मैंने वो चले गए छोड़ के, उन्होंने कहा कि नहीं मैं बड़े अच्छे इंसान हैं और आई थिंक आई होप दोबारा आएंगे या आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन ये कि अच्छा। सदफ आप कुछ कह रही थी मेरे ख्याल से। no, I was just saying is in Amushte Khak maybe there was some full kism among the good ones. तो फिल्म होते तो you are patient with but get good all आपकी आवाज ब्रेक कर रही है सदफ। जी। okay let me हाँ try. या अच्छा राना मुझे ये बताइए कि ये जो आगे आगे आई नो प्लीज डोंट आई मीन ऑब्वियसली स्पॉइलर क्या होगा हमें पता है आगे क्या होना है, बट ये बताइए कि आगे हमारे पास कितना हार्ट ब्रेक है। ऑब्वियसली थिंग्स आर गोना गेट वर्स, obviously the way the story is progressing it's moving towards the December of 1971. Yeah. I know that a lot of characters have bid goodbye and now it's I think there's only 13-14 episodes or I think probably around that, but I want to know that how much of heartbreak, because every time I watch that show because of my personal association and history with the story is so मतलब इतना एंजाइटी होता है देख के। तो आगे जी। हमने और कितनी एंजाइटी हमारी किस्मत में है। और डू यू आल्सो गेट दैट फीलिंग व्हेन यू वॉच योरसेल्फ ऑन स्क्रीन एंड डू यू वॉच योरसेल्फ ऑन स्क्रीन? Yes, I do watch myself on screen just to analyze myself. मैं अपना बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। तो मैं क्रिटिकली देखता हूँ अपनी चीजों को, मैंने कहाँ बोंगी मारी है, कहाँ मैंने गलत किया है, कहाँ मैं बेहतर कर सकता था। तो मैं ये हमेशा देखता हूँ। अच्छा और प्रेप करने के अलावा जो आप एक सेट के ऊपर एक माहौल होता है, टेंस होता है, हाउ डू यू काइंड ऑफ कोप विद दैट? बिकॉज एक एक मुसलसल का टेंशन है ना, इट्स नॉट अ मसाला फ्लिक के आज हैप्पी सॉन्ग है, कल परसों परसों आपने ऐसे करना है। पर आपको एक मजे की बात बताऊं, आप जो अभी एंग्जाइटी की बात कर रही हैं कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली आगे काफी कुछ होने वाला है जो ऑब्वियसली थोड़ा सैड भी होंगे लोग उसको देखकर। बट
यही कहानी है जो हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं। बट मैं आपको सेट्स की बात बताऊं कि वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, लाइक बिहाइंड द सीन्स हम लोग हंस खेल रहे होते थे, लाइक जोक्स चल रहे होते थे, शुगल चल रहा होता था। ऐसा लग रहा था कि कुछ सारे मिलके किसी एक वेकेशन पे आए हुए हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। वैसे आप लोग कितने जालिम हैं। आई फाइंड दिस विद एक्टर्स। मुझे याद है मैं रो रही हूँ वहां आप लोगों को देख रहे और आप लोग हंस रहे थे सेट्स पे। वेल डन। नहीं, बात देखिए, जब हम काम कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर डिलीवरिंग दो डायलॉग्स एंड वी आर वो कहानी को बयान कर रहे होते हैं, तो हम लोग जेन्युइनली उसको फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सैड हुई होंगी किसी चीज को देख के, तो हम करते हुए उतना ही इमोशनली सैड होते हैं। और वो जब तक हम उस चीज को फील ना करें, वो उस तरह कन्विंसिंगली आती नहीं स्क्रीन पे। नहीं, वी अंडरस्टैंड मस्ट बी these characters. देखो हमारे लिए इतना मुश्किल है। वॉच मेरी हाँ, साउंड में टेल यू दैट situation. Sadaf, So your voice is not clear at okay, all. We can't how about understand. this? Can Yeah, you hear me now? no, there's a lot of echo Okay. and we can't hear you at all. अब कोई प्रॉब्लम है? कोई इंटरनेट के हाँ, साथ पंगे कर रहा है, पूरी दुनिया के हाँ, साथ कुछ छेड़छाड़ी कर कुछ है, कुछ रहा मसाइल हैं, है। लेकिन हमने क्यों लगता है? है ज्यादा ही कोई बातें कर दी हैं पाकिस्तानी चैनल्स के खिलाफ। कोई नहीं, गड़बड़ नहीं, कर रहे हैं लोग कि मैं भी ये कह ऐसा रही हूँ कि बिल्कुल नहीं ये है खुरम, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम चैनल के खिलाफ बात करें। हमसे एक ऐसी जो दिल में है हाँ, वो कहना। हम लोग चाह रहे हैं कि इम्प्रूव हो यार। हम लोग तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इम्प्रूव, हम लोग तो इसमें काम करते हैं। अगर हम लोग नहीं चाहेंगे इम्प्रूव हो तो और कौन हमसे ज्यादा नहीं। चाहेगा। और वैसे जो भी हम बातें कर रहे हैं वो तो बड़ी बेचारी मतलब मासूम सी बातें। लेकिन अगर आपने ट्विटर पे अगर वैसे देखा हो, क्या नाम है, जिस तरह की ट्रैशिंग होती है पाकिस्तानी ड्रामों की, वो तो एक अलग ही लेवल पे होती है। मतलब वो तो अगर आप कभी पढ़ें गौर से कि जो पाकिस्तानी ड्रामों को अटैक किया जाता है जिस तरीके से, which is why I am such an advocate of having balanced criticism. Like I'm all for saying that yes, there are issues and yes, we need to resolve it, and yes, what are those issues? Yes, we need to discuss them also. But I feel like some of these people, they just go overboard, and I don't like it when somebody who does not even watch the dramas is out there to critique them. Like I हाँ, would get दैट्स it ट्रू। if, yeah, I समबडी हु would get डजंट it. इवन वॉच द ड्रामास वो कह Yeah, रहे they होते हैं हम तो won't. देखते ही नहीं है, नहीं, वो हम तो उनका इसीलिए काबिया, देखते ही वो नहीं है। शुरू ही यहाँ से करते हैं, वो शुरू ही यहाँ से करते हैं। अच्छा देखिए जी, मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती नहीं हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी ड्रामों में ये होना चाहिए? अरे भाई, पहले आप हाँ, देख तो लो, आप पता तो कर लो किस बारे में बात कर रहे हो। तो हाँ, आपकी और बात वैसे ये ठीक है। बहुत डिमीनिंग है उन लोगों के लिए जो इतनी मेहनत से काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर एग्जैक्टली, रहे होते हैं कि यार अच्छे से अच्छा एग्जैक्टली। बनाएं, और आगे से लोगों को इस तरह की बातें करते हैं जब, तो फिर वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तकलीफ होती है देख के इस तरह की चीज़ें। मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि यहाँ पे जो हमारा मसला है वो ये होता है कि सबसे पहले तो फ्रंट लाइन हीरो होता है हमारा बेचारा एक्टर। सबसे पहले तो उसको गाली पड़ती है, इसने ये ड्रामा कैसे कर लिया, वो ऐसे रोल में क्यों गए। हाँ, अच्छा मजे की बात है, लोगों को रोल नहीं समझ आता। लोग कहते हैं कि ये विलन कैसे बना। क्यों भाई, वो विलन ना बने तो क्या सारे हीरो बने ड्रामे में, तो कहानी क्या हाँ। होगी फिर? सारे हीरो थे, जा रहे थे, फिर एकदम कहानी खत्म हो गई। यही होगा फिर, और सारे ये हीरो भी जब एक ट्रेंड है ना कि जो विलन भी बना होता है उसे भी एंड में हीरो बनाने की कोशिश की जाती है कि विलन ना बने, हीरो ही रह जाए बस ये बंदा, वो अगर वो वो फिर एक्टर के हीरो ऊपर बन होता चुका है है। तो। जैसे मैं कभी-कभी एहसन खान से मैं बड़ी मुतासिर इसलिए होती हूँ क्योंकि उसका बड़ा बहुत अरसे तक वो हीरो बना रहा टेलीविजन हाँ, के ऊपर, फिल्मों के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन जब उसने पाए इम्तियाज का किरदार किया उडारी में, और अभी भी वो जो जिस तरह के, अभी अगर आप देख रहे हो किस्सा हाँ, अभी भी मेहरबानों कर रहा का, है जो। या जी, तो वो मैं कहती हूँ बड़ा उसका हिम्मत है कि वो पॉजिटिव रोल भी कर लेता है, हीरो भी बन जाता है, लेकिन वो नेगेटिव रोल्स भी उस तरह करता है। तो ये तो एक एक्टर के कमाल हाँ, होता है, लिखने वो वाले का एहसन ने कमाल है। इस अपनी करियर के इस हिस्से में आगे शुरू किया है। शुरू में वो भी सिर्फ हीरो टाइप कर रहा था, बट अब बड़े अच्छे रोल कर रहा है वो, डिफरेंट किस्म के। बिल्कुल, तो आई थिंक कि ये अपने एक्टर की इस्तादात पे होता है कि वो कहाँ तक जा सकता है, वो कितना कर सकता है। और मेरे ख़्याल से हर एक्टर को इस पे ये ज़रूर करना चाहिए कि वो नेगेटिव एक्टिंग भी करे। सो राना, मुझे ये बताएँ कि आप लुक्स की मेरे ख़्याल से बात कर रहे थे। इसके लिए अगर आपके पास ज़हन में कोई चीज़ हो या आप कोई कहें कि यार अगर ऐसा हो तो शायद इस चीज़ को हम ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, कि जो कि हमारे यहाँ शायद ओटीटी के बाद थोड़ा बेटर हो जाए, क्योंकि इंडिया में तो ये हुआ है। सो मेनी पीपल, जो मतलब मैंने फ़िल्म लिखी है और मेरे फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि वो क्योंकि हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है और वो यहाँ यूएई हम्म, में मुकीम हैं, तो वो ये हम्म, कहते हैं कि ओटीटी से बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को जो इतने कमाल के थे, लेकिन उनको बहुत मतलब अपॉर्च्युनिटी मिली ये करने की। सो डू यू सी एब्सोल्युटली। ओटीटी ओपनिंग अप
in Pakistan, or obviously it will mean a lot of good things for you guys, but actors especially, but do you see something happening on the ground? Yes, a lot of people are working मतलब वेब सीरीज बनाने की कोशिशों में हैं, बट द प्रॉब्लम जो मुझे एक नजर आ रही है वो ये है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या होगा ओटीटी का, टू क्रिएट न्यू प्लेटफॉर्म जिसपे सब आए, एक बड़ा टास्क है। उसके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए आपको, जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे अमेजोन प्राइम है, जैसे हॉटस्टार, पता नहीं क्या क्या है बाकी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो प्लेटफॉर्म पे कितने व्यूअर्स आएंगे, कितनी सब्सक्रिप्शन आएगी, वो कैसे बिजनेस मॉडल चलेगा, उसके बारे में थोड़े से मेरे कंसर्न्स हैं कि उसको वक्त लगेगा मुझे लगता है पाकिस्तान में। आई थिंक देखिए टैपमैट ओटीटी तो तो है, टैपमैट ऑब्वियसली तो ओटीटी जो है ना वही देयर है। फॉर आई थिंक जो जिस पे 12वां खिलाड़ी आ रहा है, आई थिंक टैपमैट इज देयर, या होपफुली देयर इज अ डील बीइंग नहीं क्रैक्ड तो आपने बिटवीन। बारहवीं आई थिंक खिलाड़ी, फ्यूचर तो यही है, फ्यूचर तो ओटीटी ही है, टीवी के ऊपर फ्यूचर ज्यादा अरसे एब्सोल्युटली जो है वो। एब्सोल्युटली डिजिटल है No, फ्यूचर I तो। don't think so. I think that there is value for cinema. I think there's value for TV, and नो there is डेफिनेटली सिनेमा but इज there is a डिफरेंट, आई एम नॉट space टॉकिंग for अबाउट there सिनेमा। is a या space for OTT for sure, which Pakistan is एब्सोल्युटली behind. But I think अगर I don't know आपने ये खबर देखी हो या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी content houses की थोड़ी बहुत कुछ deal बनी है Netflix के साथ, and they are going to create some original content. Plus we have Humayun Saeed who's going to be appearing in The Crown, या hopefully. द क्राउन या So दैट्स I अ Yeah, गुड mean, न्यूज़ फॉर अस, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। yeah, but the reason is because the Pakistani production house went past the Indian gatekeepers and they went to LA, right? So they went they had to go around certain gatekeepers. So I think that's something that we all have to learn from. कि हम लोग समझते हैं कि well we can get in if we just produce good content. We have to do a little more than. anyway, thank you guys. I think this is where we end the space. I really want to thank Rana for joining, and I थैंक यू really सो want to मच thank. मनोज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Yeah, I was hoping for more people to join from the cast, but I Wahaj had confirmed, but I don't know why he wasn't able to join. He must have been caught up with something. But we hope to have him soon, and we hope to have you soon as well. Uh, Absolutely. yeah, and towards the end And of the I'll show, ask the other guys also. I'm actually going to meet my जो बिछड़ गए fellows. So okay, we have a plan. We have a get together tonight. So lovely. I'll just leave for that. और मैं उनको भी बोलूंगा और उनको भी बिल्कुल ऑन बोर्ड लाएंगे, और Yeah. ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे। बिल्कुल So बिल्कुल, yeah. तो आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट कीजिएगा हमारी तरफ से कि वो दोबारा आएं, और हम इंशाल्लाह जब ड्रामा खत्म होगा तो उसके बाद हम जरूर जी, मोनिया वांट्स टू से समथिंग। जी राना, इफ यू जी गोइंग टू मीट द गाइस प्लीज पिक्चर्स लेना और आप फिर हमारे साथ शेयर करना। Yeah, we can be there. एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली। वी कांट बी मैं देयर बट बल्कि एक्चुअली हम लोग लाइव भी आने वाले हैं आज मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से, अच्छा तो Oh जी lovely, so we can join and check out what's happening. एब्सोल्युटली कौन कौन मिल रहा एब्सोल्युटली। है? दैट्स सरप्राइज। नहीं नहीं, कुछ लोग हैं, मैं हूँ, कैप्टन कबीर, अहमद अब्बास गिल जिनका नाम है, जी जी, फाद हाशमी होंगे, अच्छा और आई एम नॉट श्योर हु, आई थिंक उमर चीमा भी शायद आ रहा है, बट तलहा ने आना था, तलहा और उमर डार ने, जो सिद्दीक, कैप्टन सिद्दीक हैं, जी जी, उन्होंने आना था, बट आई थिंक तलहा जो है वो थोड़ी तबीयत उसकी ऑफ है, तो दैट्स व्हाई ही कैन नॉट कम टुडे। बट हमारा फिर से प्लान बनना है एक ठीक और है। ये सिलसिला जारी रहेगा। चलो फिर आप पिक्चर्स शेयर करना। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। Ji, thank you so much everyone. Thank you Rana. We wish you best of luck and more power to थैंक you, यू सो and मच, please थैंक give यू our सो मच। regards and love and appreciation for so many people Also, who sorry to jump in there. Rana, tell us what you're going to be in so we can watch out for you. हम लोग देखें आपके कौन से शोज आ रहे हैं, सो हम लोग देखें। मेरा एक शो एतबार के नाम से आ रहा है हम टीवी पे, मंडे को लगता है 8 बजे। अभी मेरे ख्याल उसकी 5 एपिसोड्स ऑन एयर हुई हैं। बाकी आई एम लुकिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट्स। आई हैव रेड फ्यू बट मुझे मजा नहीं आया, तो आई सेड नो टू देम। बट आप दुआ करें कि मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए तो मजा आए जिंदगी में। इंशाल्लाह। for या sure, we really hope that you get the projects which are suited to your talent,
And we Yeah. really hope that people like you continue to appear on the screens, who deserve to be on the screens, and you continue to and I think कि आप ये भी देखें कि आप जैसे एक्टर्स को मौजूद होना जरूरी है. कभी कभी भी डब्बा ड्रामा भी कर लिया करें, कुछ नहीं होता. उनकी भी जरूरत होती है, Yeah. जैसे नहीं कि नहीं, वो बिल्कुल, देखिए मैं वो करता हूँ वो सारे ड्रामे, ऐसा नहीं है. बट पिछले कुछ 1-2 साल से मुझे ऐसा लगा कि यार इसका तो फायदा ही नहीं है, इसका तो इम्पैक्ट ही नहीं है, फीडबैक ही नहीं आ रहा. मतलब समझ रही है ना आप? तो जी वो वो तो है बिल्कुल. लेकिन फिल्म आपको ऑल्सो, बताऊं आई एम डूइंग अ राना, फिल्म यू ऑल्सो, उसका नाम है अभी. उसमें मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. वी हैव शॉट द फिल्म, लाइक 80% फिल्म शूट हो गई हुई है, थोड़ी सी रह गई है. उसकी स्टार कास्ट है, कुबरा खान है, गौहर मुमताज है, एंड देन इट्स मी. सो वाओ इट्स अ ट्रियो. वाओ. एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू राना, आप समझते हैं कि हम लोग देख नहीं रहे. मैंने आपको नोटिस किया था इन एतबार. इट आई नोटिस देयर वर सर्टेन सीन्स आई वाज वाचिंग यू इन एंड यू वर एब्सोल्युटली साइलेंस. आंखों से ही अपनी बीवी को डांट रहे थे अबाउट समथिंग. So don't think you've been ignored. हम लोग हैं जो critics हैं, we watch very carefully all of the dramas. You would be surprised. So अच्छा, don't worry सही. if it तो looks like बताया करे ना, इतवार को भी बताया करे ना. नहीं नहीं, नहीं. सदाफ और ये लोग सब बताते हैं, ये लोग लिखते हैं, Yes. बहुत नहीं, मैं रेगुलरली लिखते मजाक हैं. कर रहा हूँ, जस्ट एक्चुअली आप सही कह रही हैं. बट देखें, हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है, मैं जो भी काम करता हूँ, ऑब्वियसली वो जैसा मर्जी स्क्रिप्ट हो, आई डू इट विद ऑल माय ऑनेस्टी. और मैं पूरी अपनी मेहनत उस कैरेक्टर के अंदर डालता हूँ. ऐसा नहीं है, मैं कोई भी काम करूंगा मैं अपना 100% दूंगा. एब्सोल्युटली. Inshallah, I just want to reassure all the actors. आप लोग समझते हैं हम नहीं देख रहे. We are, and we see that, as I've said earlier, कि sometimes जो हम लोग quote unquote supporting cast कह रहे होते हैं, वो पूरा ड्रामा अपने सर पे उठाया होता है उन्होंने. सही Because कह the रही हैं. main cast is just stars. वो 2 मिनट के लिए वो नहीं है, जज्बाती डायलॉग कह के घूम जाती हैं, और पूरी जो एक्शन है और स्टोरी की प्लॉट ट्विस्ट है वो आप quote unquote supporting cast ले जा रही होती है forward. जी So जी, don't worry ऐसे. about that. We watch you, and inshallah, I think things are changing. There's a lot of variety. So thank you so much. मैं लंबा कर रही हूँ. Thank you very much, नहीं Rana, नहीं, for थैंक being यू सो a मच, मीन्स लॉट. star. आप लोगों ने इतना अप्रिसिएशन दिया, इतना इस पे बात की, थैंक यू सो मच. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड ग्लैड. So thank you so much guys for tuning in, and we'll catch you soon. Thank you everyone for your time. Have a great evening, day, whatever it is, whatever time zone you are, and keep watching Thank you, Ji. Pakistani It was dramas. really good. Actually, we should do this more often. या, Yes, ओवर एंड आउट we फ्रॉम will. कैप्टन सलाउद्दीन. No, no. लेकिन ये कि हम इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे ड्रामा ख़त्म होने के करीब, जब हम आएंगे, या ड्रामा ख़त्म होने के बाद हम एक स्पेस ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं. सो वो भी इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. एंड आई थिंक कि डिस्कशन चली जाती है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर. मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाह रही थी, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इसके ऊपर बात करूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इस ड्रामे के थ्रू, मतलब वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, और जो उसको डिनाई करते हैं. कि फॉर एग्जांपल जो बिहारियों के साथ, या कोई भी वेस्ट पाकिस्तानी जो था जिसके साथ जो नाइंसाफियां हुई थी, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगी. लेकिन आई थिंक दैट्स फॉर अनदर स्पेस. Thank you so much once again, guys. Have a wonderful day. And the space is going to be recorded, so you can play it anytime. The link is there on my profile, and I will also be uploading it on YouTube. So ओहो, you मैंने तो बड़ी अनाप शनाप बातें की. bus up to नहीं नहीं this is यार, आपने gone काफी अच्छी down अच्छी बातें for की हैं. posterity. या Gone down for मजाक कर posterity. नहीं नहीं, बट ऐसा नहीं है, और आपसे आपसे ज्यादा अनाप शनाप बातें करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं. बट ये कि ऐसा कुछ नहीं कहा है आपने, हम डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा है. सब कुछ जो है वो हम लोग ऐसी. बेसिकली डिस्कशन कर रहे थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, नहीं बेसिकली. ये वैसे भी ये कोई ऐसी बातें नहीं थी. अगर आप बाकी नहीं, मैं देख ले, मजाक कर नहीं रहा बाकी अगर आप, हूँ. मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाकी जो ट्रैशिंग होती है पाकिस्तानी ड्रामों की देखें, वो कहते हैं ना कि इतने बर्बाद होते हैं, इतने उनको ट्रैश किया जाता है, फिर भी जिंदा हैं, तो कुछ बात है, कोई ना कोई तो ताकत है यार, जो हमें I think लेके नहीं I नहीं, was the चलती है. only producer here. I think I was the only producer here, so you didn't say anything कि जिससे मुझे मसला होगा. Don't worry about it. ओके, देन इट्स फाइन. Forum, we expect something from you. अभी आपने इतनी वो feedback ली है, so let's see. जी जी जी, definitely, इंशाल्लाह जल्दी आ रहा है. आप देखेंगे अभी थोड़े दिनों में ही आ रहा है. Okay. चले, awesome. Thank you so much, Rana. Best of luck to you, ओके जी, and thank you थैंक यू सो everyone. मच. Thank you, Sadaf. Thank you. Thank you, ऑलराइट, Mahwash. Oh, Thank you, everyone. थैंक यू सदफ. ओके.